today's session is not a lecture, nor it is a hands-on workshop actually. This is a session for all of us to learn from each other. And as a facilitator, I'm here to learn from you all meritorious fellows from your experience in the field of TEL, which stands for Technology Enhanced Learning. Moreover, my personal role in today's session be more towards letting you have metacognition, which means you'll be inclined towards knowing what you already know. So to begin with, technology enhanced learning, or in short, as we would be continuously calling it as a TEL, is any technology that enhances the learning experience. This term can be used to describe, both analog and digital technologies, but more recently, and particularly in the field of health professionals education, we see that digital TEL, not analog TEL. The digital TEL is taking over education in the form of different types of educational apps, software, and devices, tools, and so on. So actually, TEL is transforming and enhancing education and educational institutions beyond recognition. Uh, that's why I must say that as an entity, TEL is impossible to be ignored. This is especially true given the very growing prevalence of educational apps, softwares for teachers as well as for the learners. We are now entering in a phase of education. By the way, it is at the national level as well as at the global level. So we are entering at a phase of education where technology is not just a valuable resource or an option, no, but it's an essential tool helping to improve the experience for both learners as well as the educationists. So they both have become more aware now, or we can say they all are well informed, or these days usually we call them tech savvy than ever before. And much of their day is spent, like interacting with some form of technology through mobiles or internet packages or whatever. So undoubtedly, there is a general consensus among the healthcare stakeholders about the benefits of TEL. To name a few, we can say there is an exponential rise of remote and hybrid learning, which we just have witnessed, during the pandemic time, through which learners had really gained knowledge at their own pace. And also not to forget that this particular technology is providing multiple teaching and learning resources which generally keep you guys and educationists like myself more engaged. So much so that now we have to request sometimes to our students or kids at home even to even stop using their smart gadgets. So again, so this notion has been built, or this impulse has been generated that technology is necessary. And we all believe that, okay, yes, we have to go with it if you want to succeed in this contemporary time. So although there could be a very extensive debate on this topic about its pros and cons. So well, let's get back to our this session. So as you all are now ready to get started with it. So okay, during our today's session, I have to just remind you again that I will try to keep terminology as much as simple as possible because I believe we are here to learn about TEL and its basic concepts. Its basic elements, the categories, its impact on educational institutes, and so on. And we believe that few among us might not be much affluent with pure terminologies. So I'll try to avoid using the pure terminology. But as I just have mentioned earlier, as analog and digital technology. So just to let you know that when we say digital technology, it's like a technology that has translation of information in binary format, 0 or 1, like computers, CDs, DVDs, or other examples of digital signals receiving and sending devices. And whereas analog, we don't have much care about analog because we'll not deal with it in today's session. But just to give you a basic concept that analog technology is being used like in we have devices like FM radio, we have devices light sensors, and we have devices for GPS
all these things, they use impulses actually, electrical impulses. No? So that's why we call them analog. So anyway, so let's move on with today's presentation. Actually, is obviously all about TEL, but our main focus would be around main aspects related to technology enhanced learning in terms of brief background, so that we may get familiarized with what actually is the TEL. And we shall have some flavor of the current state of work in regards to TEL. For example, its main elements, implications, its usage for distance and online education. And last but not least, we'll also discuss and enumerate and look into the tools which are available to be utilized for teaching and learning in general and for online and distance learning in particular. Okay, and how about a quick quiz for all of you? Let's check this out in the next slide. Because we are in a session that is being organized for your course and that your fellowship. So, and by the way, to make our session more interesting, we shall have few MCQs, very basic MCQs that would be considered as part of your formative assessment. So, and you'll be giving ample time to make very small, brief, tiny presentation towards the end of today's session. And I'll give you later on some more details as how you are going to make your presentation and how you are going to present your presentation and what we would require and what would we expect from your presentation. So don't worry much about it. That you'll be giving ample details about it later on when the time arrives. So again, just to remind myself and just to get a kind of bridging contact between you guys, you fellows, and myself as a presenter, as a facilitator, we have to set some rules or principles that are known as objectives, so that you should all kind of keep focusing on these particular objectives, and these are SMART objectives. So and why we call them SMART objectives, I think now you people have got all your fellowship and few of your lectures already been done. So you should know that when objectives are like, SMART, they have to be specific, they have to be measurable, they have to be attainable, they have to be realistic, and last but not least, time bound. Time-based. So we are going to describe what TEL is, and at the same time, we will be able, after getting in touch with each other throughout this session, that how we have to recognize commonly used TEL tools. At the same time, you all shall be able to classify and differentiate between various components related with TEL. And you shall all be able to demonstrate steps of utilization for the tools and for the resources that are like apps and tools and whatever. And last but not least, appraising and assessment for the impacts of TEL on educational environment is also one of our objectives in today's session. So I would like you guys to write your answers in the chat box. I think you all must be aware to use the chat box. And if somebody is not aware, he or she can just, unmute yourself and tell your answers once others have given their answers in the chat box. So it's a simple, very simple, basic set of MCQs. As number one is asking that TEL, technology enhanced learning, is an emerging educational domain. So if you agree, you can say yes. If you don't, you can say no. If you are still in doubt, there's an option for you as a not sure. And same options are for the question number 2, which is asking you that TEL is a new educational domain. And third MCQ for you guys as a startup is, have you ever used TEL for your teaching or learning? So I think we'll be given 1 minute time for all of you to put your replies, your answers in the chat box. And I think the moderator would be able to look at the chat box. And if everybody has written down their answers, nobody's remaining, then we will move on.
I think still answers are being poured in. Yes, it's best way to write number one, then answer, then number two, then answer, then number three, then answer. Oh, you people have done so far so good. Okay. सर हम बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए. मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं ख्याल में गलत ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ आज जो है ना वो सिंगड़ा बैठा हूँ. ये तो माशाल्लाह ऑलरेडी वी आर वेरी अडेप्ट set of students. I'm happy, really. Good. Okay. So, guys, I'm happy to see your answers. Basically, there were no right and no wrong answers, but actually, it is an emerging educational domain. Yes. And it's a new educational domain. No. And we will let you know in preceding slides that this concept is like, quite ancient. Older than my age or even my grandfather's age. So, and for number three, if you have ever used technology learning tool, so I think most of you have done yes for the three. Now I'm basically very happy to see this yes in question number three, and there is a very rational logic behind it, because I am now dealing with guys who are like very meritorious. So alhamdulillah, this is something good. Now let's move on to knowing about the main players in today's session. So we should just get some glimpse of what we will be just keep talking about. So basically TEL, which can be defined as the implementation of technology into teaching as well as learning, is a very common occurrence for today's student. And one area of specialized education strongly influenced by this technology development is health profession education. So before we take any action, we are here defining our main players, and like medicine, mental well-being, and last but not least, TEL itself. So as a result, um, as the time has been, having a very fast pace in terms of developing a new emerging tools. So as a result, these all disciplines are now, at the forefront of the implementation of what you call it cutting edge technology into their curriculum. And we all have to just, keep pace with it. I firmly believe that most of us will not deny about the importance of three main questions whenever we are talking, dealing, learning, or teaching any concept. And these three questions are what, why, and how. And they are, these questions, if been answered, always help you, to explore about what particular topic you are dealing with. And once you get the answer to these questions, it's going to enable you and me as well to be more engaged and to show more initiative and really have a greater understanding of our board. So let's together know from the next slides that is how getting the answer to these questions would lead us towards our aim for today's session. Over the last century, various new technologies were introduced in education, in the field of education. Often educational revolutions were proclaimed. Unfortunately, most of these new technologies really failed to meet high expectations. Excuse me. It is not easy to identify a starting point even in the history of learning technologies. Maybe ancient cavemen were the very first or primitive user of this technology, where they have just started working with chemically extracted color pigments for arrangement of their painting and lessons, all these things. So what basically is TEL? It is the implementation of technology into teaching methods or learning methods to enhance the learning process and facilitate students getting their objectives. Why is it important? The teaching activity has changed with the internet or devices such as computers, smartphones, tablets. So we all believe now that it's really possible now to use even other forms of education and different means of learning, which are amalgamated with the technology and letting
this all, what does it all do? This all process lets us have focus on education actually. And without teamwork, it is impossible. So one point has to be remembered, that technology enhanced learning has to be a teamwork as well. Individual can also, excel in this field, but when he has to impart, because here we are talking TL in the context of teaching and learning. So while we are teaching, we have to teach someone. While we are learning, we have to be taught by someone, right? So, and how to achieve all this? So we know that TL is growing very fast in today's world. The new schools and the new medical schools, institutions, colleges, all their supplies are now technological. And that is valued in the classroom by the students as well. So let's explore some examples of it, like tools, resources, systems, apps, new models for teaching, frameworks, and so on. And we know that digital textbooks have replaced paper textbooks. So paper books are heavy, or now at least been considered heavy, which we used to carry without making any complaints in the past. And it is now uncomfortable to transport these heavy books daily in your backpacks. And furthermore, with the continuous advances, discoveries, and frenetic pace of events, they soon become outdated. For simulation, medical simulation really allows the acquisition of clinical skills and learning skills in many institutes now through deliberate practice rather than an apprentice style of learning. So it has got benefits as well, like simulation tools serve as an alternative to real patient, and a trainee can make mistakes and learn from those mistakes without the fear of harming the patient. So this is the basic, most important advantage of using simulation for clinical skills. And then comes LMS as a learning management systems. For example, we call them Blackboard, and there are many other names for LMS. What do? They keep students engaged with the provision of teaching, learning, as well as for the feedback. Anyone among us would try to search on internet for artificial intelligence driven technology, or TEL, and they can be called as synonyms. So whenever we try to get these technology tools on internet, there is a variety beyond our imagination. You can try and explore yourself whenever you like. But like any other technology, this particular domain also has its pros and cons. So being smart enough to choose the right smart tool is mandatory. And this is a basic rule, basic principle for everyone who is trying to play with technology. So you have to be smart enough to choose the right smart tool, and it's mandatory. And why it's mandatory, soon you are going to know in our preceding slides. So let's have a break time. We will be having few breaks here and there, just not to get you bored. I know that you guys have taken your 1 hour full length break earlier, but still, I think if you want to go and grab a cup of tea or water, like which you can manage in 1 or 2 minutes. So is there anyone who can just realize and recognize what is being shown on the screen now? Which area? Is it in Pakistan, outside Pakistan? Or if it is in Pakistan, where is this? Basically, these all three images are from one particular place. You can unmute yourself. And you can tell if you want or if you know. Any guess? डॉक्टर जुबैदा बताएंगी, उन्होंने बहुत ज्यादा पोस्टिंग्स जारी हैं. Let's hear from her. जुबैदा, any guess? There are no marks, by the way. There are no marks of grading or scores for this particular quiz here. This is just to refresh. पाकिस्तान से, but पहले दूसरी का नहीं पता. सारी एक ही जगह की हैं, वो कह रहे हैं. एक ही जगह की है at different times from different angles and different places. चले मैं आपकी हेल्प कर दूं, आपको थोड़ा सा. Should I tell you which province is this being taken from?
सर ये है केपीके। जी। अच्छा, ये कौन, हिमायतुल्लाह साहब थे? जी सर। वो हर चीज केपीके अच्छा, ले रही okay, so not to be ये biased. हुंजा या Actually, गिलगित है, Hamza Gilgit hai. Who is this speaking? डॉक्टर सारिया। Saria? Dr. Saria. Okay. Two answers. Any more? अभी आप लोग जो है ना, चलो, I should give you a hint that it's not in the province of KPK or even not from northern areas. अच्छा चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोविंस सिंध से है। सिंध में Unbelievable, बर्फ है? isn't it? हाँ, पोर्ट मुंड्रो नहीं, सिंध में नहीं हो। पोर्ट मुंड्रो पंजाब। नहीं, वो सिंध में नहीं है। जनाब ये है सिंध में, और इसको हम कहते हैं गोरख हिल स्टेशन। Later on, you guys try to explore this, and I would recommend you to spend some time there. It's worth visiting place. एक मिनट। Actually, it is situated at very high elevation of more than 5,000 feet. Exactly, it is 5,689 feet. Or it's in Kirthar mountain range. 58 miles, or you can say 94 kilometers from Dadu city. और इसकी बड़ी स्पेशल क्लाइमेट है जी, एंड टेम्परेचर गोज सब जीरो। हेलो 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 जी, तो ये था हमारा आज दादू का तो फर्स्ट गर्म क्विज। इलाका है, ये यहाँ तो बहुत गर्म इलाका है जी। और ये आप दादू से आगे हिली एरिया है, और और इसकी एलिवेशन जो है ना, वो इतनी है 5,000 से ज्यादा, और 5,000 फीट से ज्यादा, तो इट गिव्स इट्स अ स्पेशल क्लाइमेट एक्चुअली। और टेम्परेचर इज सब जीरो ड्यूरिंग विंटर and generally below 20 degree. It remains there like, 17, 15, 14 degree, even in summer. So you guys have to just give it a try whenever you will have time, and definitely you will gonna enjoy, inshallah. ओके, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही सर एक इलाका भी है फोर्ट मुंड्रो, अगर आप साउथ पंजाब से हाँ। उधर जाते हैं यहाँ डीजी से खान से लोग ऊपर, स्मगल करके कंबल तो वो हाईएस्ट स्टील ब्रिज है, और पता नहीं कितनी ऊंचाई पे उधर भी बर्फ पड़ती है, और काफी Great. वो भी नई एक दरिया। जबरदस्त जगह है। वो नहीं डीजी नहीं, खान होना के चाहिए, पास। जाना चाहिए, और जी जरूरी है ये। हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में अपने आप को जो है ना आगे से आगे लेके जा रहे हैं, और ये हमें पता नहीं कि जो है हमारे अपने सिटीज में, और जो है ना, हाँ जी। और यहाँ पे इतने फॉरेनर्स आते हैं, आप जाए तो तो थैंक यू डॉक्टर सलमान फॉर योर इनपुट, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। So getting back into the business, so we know there has been evolution, and from the ancient times, and there's been like so much changes. We started earlier with mechanization, which represented industrial production based on machines, and they were powered by water and steam and so on. Then time came for electrification, that has required mass production of using assembly lines. Basically, this electrification means the process of making a neutral body into a charged body. Whereas automation, that has arrived in 70s. So automation was about using electronics and computers. Then we have seen this time, and we are still passing through this time, that is known as digitalization. And this, everybody knows that it involves the introduction and usage of connected devices, through Wi-Fi signals and data analytics and AI technology, what we call it, artificial intelligence technology, is being also part of it. That lets have an automative process being further developed. So future is being predicted for now, personalization. What would be emerging, only God knows, but with our anticipation, with our assumption, we can say that personalization will definitely focus on cooperation between man and machine. As human intelligence works in harmony with cognitive computing these days, by putting human back into industrial production with collaborative robot leading to mass customization and personalization to customers. It sounds scary as well, anyway, but this is what future being predicted in terms of technology.
काफी जगहों पे तो So, सर ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, सॉरी आपकी बात करता हूँ, लाइक जैसे जी जी अमेजोन स्टोर है कि सेल्फ चेकआउट, आप मोबाइल के अंदर, मोबाइल से ही आप ऐप करके अंदर जाते हैं और बाहर जी आते हैं, आपने चीजें उठानी है बाहर आएंगे, नो कांटेक्ट विद द एग्जैक्टली एनीवन, और एग्जैक्टली आपके फोन से वो पैसे कट हो जाएंगे। तो इसी तरह रोबोटिक्स भी एग्जैक्टली काफी जगह पे है जिसमें वो सर्व करते हैं होटल्स में, और इस तरह तो शुरू तो हो चुका है। एग्जैक्टली they started हाँ जी। serving us and so on, and there's been so much like now this industry, the name of biotechnology, and we see that the robots are now in replacing humans while performing एग्जैक्टली। very complicated surgeries. So, and this all has to just come in next slide. Okay, जी सर। so uh, current literature, what we have in hand today is full of actually evidence, no? उस हद से ज्यादा उसमें हमारे पास जो है ना वो ample evidence है कि learners are experiencing and developing burnout. It doesn't really have to do anything so far what has been discussed. I mean TEL, but as we have earlier in our starting part of today's discussion, we said that there are many main players in this field. So medical students are also main players, and they are being burned out. And to lessen or to reduce the extent or severity of various mental well-being issues, it's important to look for the resources that might be helpful and impactful in reducing the stress and burnout, and also to have balance, well balanced mindset among all these various resources which we already possess and use. So to reduce the extent or severity of various mental well-being issues, it's again very essential. It's essential to look for resources that are available, then that they can help us in reducing all this stress and burnout issues, and also to have a balance as we already have spoken. So after you have completely integrated your smartphones into your lifestyle, that everybody is having, हर कोई अपने हाथ में जेब में, all the time, अपनी reach में access में रखता है. So now in this lifestyle that has received, and we know that many of our people whom we are known to and people who we know are having pacemakers in their bodies, and new hip joints, new knee joints being replaced, and LASIK vision that improves vision, and a few other technological implants also. So you might consider yourself a bit changed now, with all these things around you, and your relationship with technology, and your new self, when we have become like, part of this, your technology has become part of us. So it has really made us feel a changed person in our own self. So how do you put it all into perspective? Like, we know human intelligence has got like, being spoken and taught in institutes like 4 C's, capital C's, alphabet C's are very important while defining human intelligence, like capacity, competence, commitment, and creativity. But we all have to know at the same time that regarding IQ, which is known that human intelligence is a mental quality that consists of abilities to learn from your experience and to adapt to new situations and to understand and handle abstract concepts, like, very complex concepts around us, and use knowledge to manipulate one's environment. And undoubtedly, I mean, Bilashak intelligence is the dynamic interplay of engagement and ability in pursuit of personal goals. Whereas EQ is the emotion quotient which drives self-awareness. It helps in managing emotions. It nurtures self-motivation. It helps in carrying out and play around with actions that deal with empathy, and also plays a vital role in handling relationships. Whereas SQ, which is known as spiritual quotient, is again the ability to recognize your personal life principles that build one's life in accordance with human values and laws, in other words. So spiritual quotient refers to an ability to assess our deepest meanings, values, and what to say, purposes and motivations as well. So
We believe that spiritual quotient is therefore the intelligence required to ask most fundamental basic questions in life and seek answers to them. And questions like, who am I, where am I, what is going to happen afterwards, and many more. Now ask yourself, isn't it that now a new you, a brand new you is emerging? And in this emerging new you, composed of, is it just composed of just flesh and blood, or has been like, silicon replaced carbon as part of your technophysiology? So we have to think that how can we consider things like IQ and EQ in the context of the techno-evolved human? In fact, it's been argued that we may already need to expand IQ into broader perspective, which can include BQ as well. BQ, body quotient. And then emerging one is MQ also, moral quotient, just to better capture today's reality in your own self. We may later, in some other, I think, session, some other dedicated session may deal with BQ and MQ. But today we try to find in ourselves how my or your new you or my new me require a new Q. What this new Q could be. Techno quotient. If this is a high time for me and you as a new you, then definitely it's also high time for a new Q as well. Why not? So maybe technology needs to be more empathetic, but perhaps we should just start thinking other way around and like, in a curious way that it might just be humanity also that needs to be more empathetic towards technology. So I don't think there's a mushy middle here. That's why we say that a bland compromise that obscures and doesn't resolve, and it keeps on going on. So I'm fine with defining our humanity by IQ, and I think that EQ is great too. It's great too. But maybe it's time for a new Q, and this time technology demanding a seat at the table. So while introducing TQ, which is technology quotient, and that represents a personal ability to adopt and to integrate technology as compared to a statistical norm or average for our age taken as 100 or maybe so on. So if we are able to connect the ties in our daily life or routine work, and by the way, our routine work, roams around our professional workplace as well, or rather most of our hours in any given day are spent in an environment which require us to have a mind which is nourished with all required quotients, and especially as the technology is emerging all around us. So we must equip ourselves with the TQ as well, that is technology quotient. So ties need to be connected in today's time more than ever. Let's see what WHO has to contribute. Contemporary society, like today's world, if you see just if you look around in our neighborhood, at our home, while we are spending time with our friends, or even in the classroom, in the lecture hall. So contemporary time is somehow happy and satisfied to see the new generation being involved, or rather, as we see them being immersed in the digital world, and sometimes being called with various names. Sometimes we call them digital native, tech savvy. Sometimes we call it net generation. And the caretakers, who could be parents like me, or even the teachers, they might or might not seem to be worried. Some of us, not everyone, they are not much worried about the actual health of their child, of their learners, as students. So this all predicts what? This all really predicts a need of balance between various aspects of students' health, be it psychological, social, mental well-being, physical well-being, everything. So actually, why we are so concerned about having a balance? So we have to get this answer, and we have to know that what is going to happen if we are not having the balance. So that we are now going to
share. So as we all know that, and we all read every time, we hear from our seniors very often that, beta, it's never too late. Beta, it's never too late. Beta, it's never too late. Okay, it's never too late. Okay, I also believe it's never too late to make things right, or to start right things right away. But in reality, it's always good to start working before it's too late. So when we say it's never too late, doesn't mean that we have to just keep waiting, keep lagging till the damage has been done. So, otherwise, what could be the consequence? Let's check this out. So if we have a balanced mindset, this is what we have. If we have all the cues, all quotients are aligned in a balanced mindset, and this is going to happen, like, robots will be also giving surgeons a helping hand. So we can see that TQ, IQ, EQ, SQ all are being aligned, being in place. But at the same time, we have to see what happens. This is what happens, and this is reality. What happened on the left hand side, you can see is an example of consequences of not having so not having the balanced mindset for all ties together is not a small thing. So now choice lies with us actually, as to which side of such a particular image as we are having it now on our screen, we wish ourselves to be on. So that's why balance needs all cues to be aligned. Excuse me. Now, if you check out on PubMed, which is a database or search engine, and what I have done just earlier this morning, I just typed 3 words: technology, enhanced learning. And to my surprise, it's very clear that the concept of TL is not new. I knew it. And also it's not very uncommon, as plenty of research is already been done. So in this slide, as you see that what happened, when I put the filter from years 2000 to 2023, I think anybody who has done any research course or any work was done with your help as a student or as a doctor, as a researcher for publication, you all know what PubMed does. If you just put filters, it gives you filtered results. So when I put the filter for the years from 2000 to 2023, I got 12,926 results with only this terminology used in the search box: technology, enhanced learning. So much so already being published. And you know what? When I put a more strict filter, like, for the last year only, I put it like 2022 to 2023. So now PubMed has to give me the results from 2022 to 2023. That was again 5,373. I think Dr. Salman has raised hand. सॉरी सर, अच्छा ये जो आपने दिखाया है सर, ये 13 साल की रिसर्च आप बता रहे हैं? Exactly. ठीक है, अच्छा उसमें वो 20 लिखा गया था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. ओके, इट्स ओके. Yeah. Is a typo. ठीक है, पहले मतलब के 13 साल में 12,000 रिसर्च है. Yes, you can see on the PubMed page, the filter on the left hand side, the graph, like, it's a kind of graph going from 2000 to 2023. And when I just filter it out again to make, to gain the knowledge that what has been published in the last year only, particularly in the last year. वो 50% से भी ज्यादा है एक साल के अंदर. Exactly. So it's like, astonishing. It's astonishing. At the same time, on the left hand side, Salman, you and others, you can see on the left hand side, there are journals with the name of technology, and they're publishing so much research every day. So if we are not knowing, we are not getting to know this particular concept that we are discussing right now with all you guys here, so probably we'll be lag behind. So that's why it also just gives you the significance of today's session. So let's move on to see that I tried to check that when it was, I mean, the first I couldn't get it exact idea because on PubMed, some results were different, and on the, the other databases like Medscape and like Science Direct and Web of Science, I tried to find it, but exact
date was not mentioned, but I could check a very ancient time article written in 1975, and that was in the Journal of Nurse Outlook, and they have just they really touched this particular topic of TEL actually, and that was published in 1975, maybe before the birth of many of you people. So and that was an overview actually, and it has discussed various aspects of TEL. If somebody is interested later on, you can just get to know through these articles. The advantage of using audiovisual instructional techniques were also being dealt in this particular article for the nurses. It was noted also for administrative strategies for encouraging the effective use of educational technology, and all these details were provided. So these days, actually, in our current times now, among us, I don't know, or I don't, assume there would be anybody living without mobiles. At the same time, among us who are not familiar with Google Forms these days, I think either we are regularly creating Google Forms to get collection of the data from our samples, our subjects, our students, or if we are not creating ourselves this Google Form, it is we have been requested, or you might have been, I think, already experiencing to being requested by your other colleagues, your seniors, to fill out online Google Forms. And Google Forms, actually, it is a survey administration software included as a part of free. It's free and free web-based Google Docs. And there's a Docs editor suite being offered by Google, and this service also includes Google Docs, Google Sheets, Google Drawings, Google Slides, Google Sites, and Google Keep. So Google Forms is only available these days as a web application, and I guess that most of us know it. And even if somebody may say, "Oh man, no, I don't use mobiles. I've never been in touch with Google Forms and never have used Google Forms," and so on. So at least we can show them this particular old machine, or probably if it is very old for you guys, so maybe this one. Okay, so at least these people who deny having mobiles or deny knowing Google Forms, they cannot deny that at least they might have seen these old machines or these new computer sets in whenever they visit banks or any corporate offices. So means every one of us in some way, to some extent, being touched, being coming in contact with these machines. So it's very obvious. So now again we have because every 10 slides I have keep a break for 1 or 2 minutes to refresh ourselves, so that you should not get bored. So now again, कौन बताएगा भाई? पहले तो ये तो बता देंगे पाकिस्तान में है कि is outside Pakistan. First question. Then we'll jump on to next question about its location. सर ये सर पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं नहीं लग रहा। है। इसमें पाइन ठीक। ट्री, उसमें अजीब ट्रीज मुख्तलिफ से। गलत जी, हार जी, के जी। पास इस तरह की लेक्स हैं, लेकिन उधर ये एक है नील वहां, लेकिन पता नहीं है वो है कि नहीं, कलर वही है, नील वहां वाली लेक भाई एक पहले तो थी। ये आप डिसाइड कर लेना कि is it Pakistan or outside. Then we'll jump on to the next question. पाकिस्तान में है या नहीं? शायद सब पाकिस्तान। दरख्तों से लग रहा है आउटसाइड है, वैसे इस तरह की लेक मैंने देखी हुई है कलर का मुझे के पास। नील वहां लग रही है। अच्छा भाई है पाकिस्तान में. This was a big hint. और मैं आपको या तो प्रोविंस बताऊं, और you can make your judgment. प्रोविंस You बता want me to give you the province? You guys are like so young and not being kind of traveling anywhere. भाई जाया करें कि सारा दिन टेक्नोलॉजी में इमर्स्ड हो गए, पढ़ाई में जॉब में फंसे रहते हैं सर। सर घर वाले नहीं जाने देते। घर वाले नहीं जाने देते। सलमान साहब पढ़ पढ़ के थक गए, चश्मा लग गया तो सब कोई लग जाते। तो दिस इज एक्चुअली इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान अब काफी लोग जा रहे हैं सर, पहले तो लोग नहीं जाते थे, अब काफी टूरिज्म खुला है, लोग जा रहे हैं। जबरदस्त जगह है। और हना लेक नहीं, हना लेक तो नहीं, दैट इज वेरी डिफरेंट। वो तो
That's very different. और ये हना लेक से जरा दूर है, ये बोलान में है, बोलान वैली अगर आपने सुनी हो, इट्स लाइक आई if I'm not wrong, maybe 65 to 70 kilometers from Quetta. और वो वहां पे जनाब जो कैस्केड्स है ना, वाटरफॉल पूरा कैस्केड होके नीचे आता है रॉकी माउंटेन्स में, और साइड मेकिंग करता है. इट वाज थ्रू मेनी स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स अमंग द शेडी पाम ट्रीज. ये एक्चुअली पाम ट्रीज है, तो पाकिस्तान में बड़े कॉमन होते हैं और बहुत जगहों पे. खैरपुर में तो पूरा है वो डेट्स जो है ना, फार्म्स वहाँ पे बहुत है, सिंध का इलाका है खैरपुर में. तो एनीवे दीज आर पाम ट्रीज एंड अच्छा इसको कहते हैं, वो अजीब सा नाम है, सो I didn't want to mention it. कहते हैं पीर गैब वाटरफॉल्स, और उसको कहते हैं पीर गायब वाटरफॉल्स. ये बड़ा मशहूर है. So if you can just search later on, probably you will get to know about its exact location. But I could recall it's like 65 or 70 kilometers from Quetta. It is situated in Bolan Valley. So it's a must-go place. It's a must-go place, huh? So maybe later on, when you guys have time, and when Salman will get some time from his study, so he have to refresh himself. So देखो सलमान, अगर आप जाएंगे ना जरा तो घूमने फिरने, तो जरा पढ़ाई पे ज्यादा अच्छा ध्यान रहेगा और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी इंशाल्लाह. राइट? सो वालेकुम सलाम. हेलो, मैं डॉक्टर रेहाना बात कर रही हूँ. आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोबाइल की बात की ना, मैं हूँ एक्चुअली रोबोटिक सर्जन गायनी में ना, गायनाकोलॉजिकल रोबोटिक सर्जरी करती हूँ. उसमें जो भी सर्जरी हम कर रहे हैं वो सारी एक ही डेटाबेस में जा रही है, और वो इवन मेरे सेल में लाइक जितने भी केसेस मैंने किए, अगर मैं टच करूंगी तो सारे खुद ब खुद ही मेरे सेल में आते जाते हैं. उन्हीं का सिस्टम है, और पूरी दुनिया की सर्जरीज जैसे एक ही जगह पे कलेक्ट होती है. दुनिया में जो भी गायनाकोलॉजिस्ट उस रोबोटिक सिस्टम पे कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है. हाँ सेंट्रलाइज हो गया, वो रोबोट उसको एनालाइज करता रहता है आपकी सर्जरी को, आपने क्या इक्विपमेंट यूज किया, कितने सेकंड्स के लिए, कहाँ क्या किया. तो इसी से वो कह रहे हैं कि जी पूरा डेटा उसमें एग्जैक्टली पूरा डेटा उसमें स्टोर रहता होगा. यू कैन शेयर इट के अलावा इंटरप्रिटेशन भी साथ ही साथ है, मैकेनिज्म ऑफ इंटरप्रिटेशन भी आपकी सर्जरी. तो मतलब हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर. हाँ, कल को वो कहते हैं इसी को तो टेक ओवर करके रोबोट खुद सर्जरी करेगा कि कहाँ क्या स्टेप किए गए उसकी एनालिसिस से ना. हो रही है जी, हो रही है बिल्कुल. वो जब वो पूरा इंटरप्रेट करके उनको यस और नो करके जिस तरह डेटा फीड किया जाता है ना, एग्जैक्टली रोबोटिक सर्जरी हैज गॉट इट्स टेकन इट्स ग्राउंड नाउ. हाँ, So it was डेविंची great का था hearing from सिस्टम, you, your उसमें personal नहीं था ये. experience. Wow. हाँ, डेविंची Great. का था, उसमें नहीं था. ये भी सीएमआर का है ना, यूके का. इसमें ये सारा सिस्टम है जो Oh, great, रिपोर्ट को सेल्फ उस पे लेके जा रहे हैं कि वो खुद करे लेटर ऑन 8 years 10 जी years हाँ, बाद. जी हाँ. और I think as they claim that would be more safe even because there would be very less chances of risk. बहुत thousands of surgeries जब हो जाएंगी तो एनालिसिस बहुत बिग हो जाएगा ना एक सिंगल सर्जन की वजह. हाँ, डिसीजन मेकिंग के लिए उसके पास इतना डेटा होगा कि if this happened that you have to do this, this happened then you have to do this. That's we call techno-human collaboration. So wow, great. So we have great audience today, mashallah. तो आपका तो real hand और ये practice already आपको being through this. So I'm gonna learn from you. Great knowing that, great hearing that. So if you allow me, we have to get back to our next quiz. Thank you. And this all has been chat box, right? So that we can later on just take this record from the chat box, and it's gonna be part of your formative assessment. And formative assessment hoti hai, summative assessment hoti hai. You all must know it. So और formative का एक जो है ना part होता है immediate feedback. That we are also trying to provide you now, because without feedback, I don't think that the formative assessment is going to be valid one. So to make it more reliable and valid, we have to keep giving you feedback. So if you all have done your answers for this three questions, I'm gonna show you what lies beneath. So good luck to them who has taken option as yes, and let me give you some evidence from the literature. कि हम जो भी बोलते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ reference, कुछ evidence होना जरूरी है. So this particular study done by ROMC in 2022, their aim was to examine the perceptions of youth and learners on the use of TEL, and after a thorough investigation, that particular paper
or those authors actually, they concluded that the teachers perceived that the use of TL platforms was an efficient approach. So they also mentioned another interesting point था वो जरूरी बड़ा interesting point उन्होंने mention किया था कि or that point is also backing the answer in question number 5. So I'm now telling you because you already have mentioned your answer. So I hope you will not change your answer after listening this. That they also mentioned that is TL was perceived to enhance language learning, and they perceived the use of technology for educational purpose was also difficult. So the only explanation उन्होंने क्या provide की थी कि I mean for this particular phenomenon कि उनको difficulty क्यों हुई थी कुछ participant को, it was the empirical evidence that inside reporting on the need of learners and teachers level of digital literacy skills. वो हमेशा जो है ना दो ग्रुप रहेंगे, हर फील्ड में होते हैं, टीएल में भी रहेंगे तो there will be participant who will be conversant, very adept, very expert. At the same time there will be like intermediate kind of students and learners, and those also would be lagging behind. But there are particular reasons that why did they lag behind, and if somebody can really उसको target कर लेगा ना, अगर उनकी जो capacity building पे work करके और need assessment पे work करके कि what were the reason for them to lag behind, then again they can catch up. So this is a good sign actually. So nothing to worry about it. So now for those who have done yes for question number 5, again congratulations, and we are providing you with some evidence. There's lots of paper published in agreement with the same notion, but I have taken this something that was like more prominent and more recent one. For this particular paper been done by Purnama, they have done it in 2021, and their main objective was to determine वो main factors को देखना चाह रहे थे, which can affect digital literacy and related online risks. So lagging behind alone is not a problem. ये हम सबको जानना चाहिए कि कोई पीछे रह गया, that's not a problem. He can being brought up and being helped, being supported, being encouraged. But it's not also very simple, as if you are not aware how to handle the new technology. It's not very simple. Means you will only, it doesn't mean that you will be only failing in getting benefits from that particular tool or device or app or resources that is for TL. अगर आपको नहीं आती तो आप वो यूज नहीं कर सकेंगे. सिर्फ एक यही इसका प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि anyhow you have to get indulged due to peer pressure, due to your needs, probably due to your learning needs. आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है ऐसे बहुत से डिवाइसेस को यूज करने में, एप्स को यूज करने में, रिसोर्सेज को. अगर आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं डेवलप कर रहे, if you are not taking guidance from the seniors, or if you are not still conversant, so if you are not much efficient in dealing with the usability, so anyone like he or she might fall a prey in the hands of cybersecurity issues, cyber theft issues. There are many apps which are not legit. वो तो बनाई इस पर्पस के लिए गई है कि they would simply ask you for your credit card details, or sometimes they may ask many things about your personal life. So this all puts you at risk. So being lagging behind is a small problem, but keeping yourself in that position is a larger harm you are going to put yourself into. Similarly, these authors that we just mentioned in question number 5, they have concluded that, and what did they say? They say that their findings confirm that digital literacy can affect online risk in cyber world. So moving on to question number 3 again. So a big congratulations for those fellows who have taken the answer as yes. किसने इस पे नो किया था क्या? और नॉट श्योर किया था किसी ने? नॉट श्योर मैंने किया था. अच्छा, नॉट श्योर, यू आर प्लेइंग सेफ. ये भी ठीक है. नहीं सर, मैंने उसको रीजन लिखा आगे. अच्छा ठीक है. That's I'm going to take from the record inshallah. So when we have an increment in the academic performance of students during the recent pandemics, was attributed to an improved online learning environment. So what they have proved, they said that actually they have investigated how the medical school and all these institutes or the colleges, schools closures when they were shut down in 2020.
So it has influenced the performance of students in curriculum-based online learning. But what interesting, they found that the students' performance increased actually during the shutdown of schools in 2020 relative to the year before. So 2019 में जो उन्होंने कोर्स के जो स्कोर्स थे, ग्रेड्स थे, उसको जब कंपैरिजन किया 2020 से, so they found that student performance was higher than before, and they also conclude that the online learning environment may be effective in such scenario actually. Another finding which I personally, अच्छा मुझे बड़ा वो उसमें ना एक वो स्ट्राइकिंग फाइंडिंग एक और भी इसमें मिली पेपर में, आप भी पढ़िएगा, बड़ा दिलचस्प पेपर है. That particular finding was, as author stated, that low achieving students, जिनके ग्रेड हमेशा कम आते थे, they also have shown greater improvements in performance, even than those students who were the high achieving students. So actually what they have suggested, the author suggested that there has been narrowing of the gap in performance between low and high achieving students. Yes, if I will open the forum for discussion, so you also might raise some concerns के भाई हो सकता है वो open book exam हो गए थे, हो सकता है कि वो exam venue was at their home, probably they might have just taken some unprofessional, unethical usage of kind of taking help from the elders, from peers while doing the exam. There could be many other reasons. So there has to be something more intensely being done as an what you call this future work built up on this particular study. So वो जरा उसको control भी कर सके environment को भी अगर, so I think then their answer would be more logical. I mean in my personal जी opinion. So सर it's ये not मैंने like, नोट श्योर इसलिए लिखा था कि नो डाउट अच्छा, इसका फायदा तो हुआ था, फायदा है भी, yeah. लेकिन और वो हमने रीजन जो नोट की probably थी चीजें, factors कुछ और भी हो सकते थे. हाँ जी बिल्कुल, वो हमने जो नोट किया था कुछ चीजों में ऐसे था, जिस तरह मैट्रिक एफएससी का आपने देखा था, उन लोगों को जो नहीं दे रहे थे एग्जाम उनको वो भी पास हुए. फिर कुछ लोग Exactly. मेडिकल में भी ऐसे था कि सिंपैथी के तौर पे भी लोगों ने कहा कि चले यार पास कर देते हैं, लीनियंट मार्किंग कर देते हैं इनकी इस बार. तो वो चीजें भी जी हाँ, बीच में है, bonus लेकिन mark नो डाउट मिले, इसका bonus फायदा भी मिले. था. I agree. तो इसलिए मैंने नोट श्योर लिखा था, नो नहीं किया. I agree. फायदा हुआ भी है, लेकिन I नोट agree. मैंने इसलिए लिया. I agree. क्योंकि होता है ये ना कि सारे हाइपोथेसिस को अगर वो करते जाते हैं, डील करते जाते हैं, तो और अपने ही जिस डायरेक्शन में उन्होंने स्टार्ट किया था एम के साथ, और वो प्रूव हो भी जाता है, तो बहरहाल वो तो काम होता है क्रिटिकली जी अप्रेस करने का. द रिव्यूअर्स when they are reviewing these paper, they must have just raised these concerns, and probably there have been some issues which have been dealt. So anyway, but that was a finding. So अगर हमें अब देखना है भाई ट्रांजिशन हुआ है, नहीं जाहिर बात, it's still an ongoing process. So transition from traditional to TEL resources, and it's very common among healthcare educators. और मैं खुद अपने कोलीग से ही सुनता रहता हूँ, वो जब भी बात करते हैं फ्लिप क्लासरूम रनिंग जो है एजेंडा उनके पास होता है कि and they assume that it's the main or the only TL domain. और हमारी कोई रिसर्च भी हुई है इस पे, फ्लिप क्लास पे पब्लिश हुई. तो मसला ये है कि हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, तो वो ये करते हैं कि ट्रांजिशन जो हुआ है, ये लेक्चर जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स थी उनसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमने आगे यूज किया है, एंड वी हैव जस्ट लैंडेड in a domain of flipped classroom. So this is the only entity which is there in the context of TEL. Well, it's not true actually, because the flipped classroom is one, but not the only platform. It's not the only teaching modality being related or being augmented by TEL. So as educators strive, जब वो आगे जाते हैं ना, engage करते हैं student को in the process of learning for more directly with active learning. So this means you need to include more interactive activities in your classroom. You can also, dramatically improve your student performance by incorporating interactive elements into your lessons, which we'll see and discuss and share with you guys in next few slides. So digital age ने क्या किया, revolutionize तो कर दिया. I mean, every aspect of your life is being revolutionized, and education is not different. So let's remember educational technology. What is it? Actually, it is the set of information and communication for resource, processes, tools. Those all could be applied to the structure or jitni bhi activities hai usme, for the educational system in its
various fields and levels. So let's see the next slide. कितना उसमें जो है ना वो स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि वो ट्रू है. Okay, we have just much talked about local perception, which is limited, but in reality, the global perception and dependability on the cutting edge technology is इतना ज्यादा आगे चली गई है कि अब हम लोग तो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, but still there is a long gap between what really has been done and what are we doing these days. So this is shown by its use in health professional education and also in medicine. There is a rise of digital physical therapy. कोई है फिजिकल थेरेपी से ताल्लुक रखने वाला कैंडिडेट आज के हमारे इसमें? नो सर. ओके, सो नो, बस हमारे जो कोलीग्स होते हैं, जो सीनियर या हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से हमें ये जरा एक्सपोजर तो देता ही. So what we see here actually the rise of digital physical therapy, and what does it do? इसने क्या किया कि पेयर कर लिया है ह्यूमन फिजिकल थेरेपिस्ट को AI डिजिटल थेरेपिस्ट के साथ. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिजिटल थेरेपिस्ट होता है. So this combination delivers highest quality personalized clinical physical recovery you can even imagine, and you can achieve anytime, anywhere. उसमें क्या होता है, wearable motion sensors है that detect precision movement during each session, and that particular component of artificial intelligence therapist, it uses the motion sensors data to provide real-time feedback. वो आपको encourage करता है और फ्लैगिंग भी करता है कि जहां जहां एडजस्टमेंट करनी है ना, तो वहां पे वो साथ साथ आपको रिकमेंडेशन भी देता है. सो फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ऐप वी कॉल गेट यू बेटर, और लेटर ऑन यू कैन ट्राई इट. गेट यू बेटर व्हिच इज अ डिजिटल थेरेपेटिक्स फॉर माइनर इंजरीज. सो दीस डेज पीपल विद माइनर और जो कहते हैं कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, शोल्डर पेन है, कमर दर्द है, ये यूजुअली these all musculoskeletal conditions that been known as a common one, and these people spend 99% of their time in self managing. ये दवा खा ली, ये टेबलेट खा ली, ये जो है ना गरम जो है ना यहाँ पे पैच रख दिया, इस तरह का. So almost all will benefit from safe and effective self management, and they will be able to prevent for over treatment if they will start using Get You Better. What does it do? It provides evidence-based digital self-management support for all common musculoskeletal injuries and conditions. Common तो ये होती है ना, back, leg, neck, shoulder, knee, ankle, and all these joints. So this all work has been going on in very fast pace. It's rightly said कि भाई, if you want to start, then surely at some point in life we have to begin. और हम तो मानते हैं कि हम तो लाइफ लॉन्ग लर्नर है सबके सब. So और keep practicing is also very important. We shall surely get experience and we shall get more confidence if we'll keep practicing. So the big question arises कि भाई स्टार्ट किधर से करना है. अब होना तो है इंडल्ज, क्या करें कि अगर आप लोगों को कोई भी टूल, कोई भी मतलब कोई नीड है आप लोगों की, आप लोग रिसर्च में इन्वॉल्व है, टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व है. मैं खाली टीचिंग में आप लोग जरूर इन्वॉल्व होंगे, वरना कम से कम लर्निंग में तो इन्वॉल्व है ही. अभी भी आप लोगों की लर्निंग ही हो रही है, और फेलोशिप इज वन मेन डोमेन that really has to do a lot with TEL. So जब आप किसी भी टूल या जो आपकी नीड है उसको ढूंढना चाहते हैं, क्या शुरू करते हैं आप लोग? पहले क्या करते हैं, मतलब पहला कदम आपका क्या होता है? जनरल क्वेश्चन. एनीबॉडी कैन वांट टू मेक अ शॉर्ट क्विक कमेंट. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सर यूजर फ्रेंडली हो, जो भी टूल हो वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो, और राइट, दूसरा उसको मतलब हम ये भी देखते हैं कि वो फ्री हो. बिल्कुल. और ये भी देखते हैं कि वो हम इजीली उसको यूज कर सके, डाउनलोड या जो भी करना है, ये वाली बातें देखते हैं. राइट. फिर हम देखते हैं वो जो टॉपिक, जो चीज हमने पढ़ानी है उसमें वो उसका यूजफुलनेस कितनी है. एग्जैक्टली. बिल्कुल, ये आपने कूजे में समंदर को, दरिया को बंद कर दिया. ये सारी चीजें ही जरूरी है, लेकिन होता ये ना कि अगर हम चाहते हैं कि हम देखें कि भाई वो हमारे कितना काम आएगी, यूजर फ्रेंडली, वो तो जब हम आगे यूज करना शुरू करेंगे, then we will get to know that what was the level of his user friendliness. So
If I were you, ChatGPT is famous right now. sorry, please repeat again, Salman. ChatGPT जैसे आजकल काफी हॉट केक बना हुआ है. हाँ, अभी तो नेचर में Easy. पब्लिश हुआ है ना आर्टिकल इसके खिलाफ भी. Easy और और यूजर Yeah. फ्रेंडली है standard. और what they have done actually, वो जो उन्होंने कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो इसके थ्रू उन्होंने प्रोड्यूस किए, वो एब्स्ट्रैक्ट वो भी बना plagiarism देते में हैं आ गए. आपके. और नहीं, वो जब उन्होंने इसको एवेल्युएट करना शुरू किया तो बड़े एक्सपर्ट्स जो रिव्यूअर्स थे वो नहीं समझ सके. उनमें से 3 या 4 को उन्होंने एनालिस्ट किया कि भाई ये एआई से लिखे गए हैं, लेकिन वो नेचुरल लोगों ने लिखे थे, रियल लोगों ने. और जो उन्होंने कहा ये रियल लोगों ने लिखे गए वो जो थे. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. लास्ट वीक आई आल्सो रेड, I have just shared with my colleague. So I don't recommend for you guys to use those things. And वो हो रहा है आजकल ना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लोग यूज कर रहे हैं. और हाँ जी. तो ये तो मतलब एक उसकी हाईएस्ट, मतलब आप समझ लीजिए उसकी पीक पॉइंट थी कि जहां उन्होंने पब्लिश किए पेपर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी. और एब्स्ट्रैक्ट तक आपने नहीं लिखा, एब्स्ट्रैक्ट भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है. And that was not being realized and recognized by the seniors. So I don't know what seniors level was there. Anyway, so मैं कह रहा था कि अगर मैं हूं ना आपकी जगह, तो पहले इससे कि I will start delve into the search for any technology tool. The first ever thing I will do will be to know specific needs, right? As Kuratulan rightly said. My needs से जो है fulfill होती है नहीं होती है. It's extremely important that we must aware ourselves of 3 main aspects related to technology. Number 1, the elements related to TL. What are the elements? I'm going to show it to you. Then number 2, the main components of that particular technology. And last but not least, the impact. कि वो हमें कितना काम आएगा या हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. So these all 3 aspects we shall discuss in coming slides. So let's move on and start with TEL elements. So starting with a clear picture of what is important for students. हम तो सब जानते हैं ना कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं या आप हैं जब फेलो हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम में, या आपके फिर स्टूडेंट्स हैं जो आपके जूनियर हैं, जो कॉलीग्स हैं आपके, और फिर आपके जो भी हैं, they are all able to do competence and they understand competence with a very simple thing that वो कहते हैं हम competent consider की जाएंगे कि अगर तो हमारे grades और scores जो है ना वो बने रहे. और उनके लिए हमेशा ये जो है ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि it's part of your the decision that you will be given at the end of your any course that you are involved in. And like every walk of life is having some regulations being put into practice by regulatory authorities or governing agencies. And unfortunately, for TEL, actually, this particular aspect is still lacks actually. It lacks sound and robust mechanism. हमारे पास अभी है नहीं कि हमारे पास जो है ना इस तरह सा प्रोवाइड हो, कोई मैसेज आ जाए अगर आप एक्सेस करते हैं किसी भी वेबसाइट को लर्निंग के लिए या टूल को डाउनलोड करना चाहते हैं. बहुत लिमिटेड सी, हमारे कंट्री लेवल पे तो बहुत ही लिमिटेड वो अथॉरिटीज हैं जो आपको बताएं कि आपके लिए है या नहीं है, और उसमें बड़ा आपको सेफ रहना पड़ता है और आप खुद एक्सपर्टीज आपकी होती है. आपके कुलीग्स आपको बता देते हैं कि दिस साइट, दिस वेब ऐप इज ट्रस्टवर्दी, सो देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. So but today this is not our actually main objective, so let's move on to the capabilities like associated with TL. So it is like multi-targeting capacity of TEL, what we see in 3 terms like cognitive, attitudinal, and performance skills. For cognitive, we can say that detailed skills can be considered वो enhance करती है ना human cognitive activities को. It's proven actually, or results have evidence the influence of detailed exposition on cognitive development. आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी कॉग्निशन लेवल और ये चीजें में उसमें बढ़ती हैं अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कोई इस तरह का ऐप जो आगे हम आपको बताएंगे कॉग्निशन के लिए. So the cognitive performance is looked enhanced and better developed. For attitudinal, and that can be also determined on the basis of
लर्नर ने परफॉर्म कितना किया, उसका रोल जो था, और फुलफिल कितना किया उसकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स. It has been seen again that a positive attitude makes the task more satisfying and rewarding. So behavior of a student to a great extent is molded by his or her teacher in the classroom. अगर हमारे क्लासरूम में टीचर जो है वो एटीट्यूडनल लेवल पे जाके किसी चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं. इसी तरह से तो टीईएल में कैपेबिलिटी है कि वो टीचर्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सो वी नो फ्रॉम द लिटरेचर नाउ दैट attitudinal development is also resulting from this particular player TL itself. And for performance skills, we know that professionals also are developing students visual, manual, and procedure skills as well. क्योंकि clinical simulation में यूज होता है. और भी हमने सुना एक पार्टिसिपेंट ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो रोबोटिक्स इस सारी चीजों से जो है ना परफॉर्मेंस स्किल्स जो है वो कितनी एनहेंस होनी है. सो अब उसमें प्राइमरी बेनिफिटर भी हैं टीएल में एज अ मेन एलिमेंट्स, और ऑक्सिलरी बेनिफिटर्स भी हैं. अगर हम चेक करते हैं तो लिस्ट ऑफ बेनिफिटर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम टीएल इज वेरी एक्सटेंसिव. सो लेकिन हमने उसको मेनली कंप्राइज कर दिया प्राइमरी एंड ऑक्सिलरी. द प्राइमरी वी हैव स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, पेरेंट्स भी हैं उसका पार्ट, टीचर्स, एम्प्लॉइज. ऑन द अदर हैंड इन द सेकेंडरी लिस्ट we have patients, family, population, and community care domains also. So let's see in the next slide as what tools are required, especially for online and distance education. So first we have to just know and have a small glimpse at what actually it is, distance or online learning. What does it do? It encompasses any student's learning that doesn't take place in person classroom, like face to face नहीं है. अगर हम उसको डिस्टेंस के ना ऑनलाइन करें, चाहे वो नेक्स्ट रूम में हो, whether it's वीडियो लेसन्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, एसिंक्रोनस लर्निंग एक्टिविटीज हैं, डिस्टेंस लर्निंग है, जितनी भी जो कंपोनेंट्स हैं, दे हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल टू स्टे कनेक्टेड थ्रू डिजिटल टूल्स एंड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. इसमें आता है पीयर डे. इट हैज अमेजिंग फीचर्स इंक्लूडिंग, इनका एक डैशबोर्ड है वो अवेलेबल है आपके फोन पे, टैबलेट पे, एंड द एबिलिटी टू शो और हाइड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स सेट. ऑल फीचर्स यू कैन गेट इट देयर. यू कैन आल्सो गेट फीचर्स दैट लेट यू सेंड पर्सनलाइज्ड नोट्स. इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को आप भेजते हैं, और यू कैन ऐड अप सम फन ऑडियो फाइल्स टू ऐड to your presentations. Then we have Google Classroom that has been created for teaching and learning actually. And Google Classroom is an all-in-one tool that makes learning flexible and accessible anywhere in the world. अब टीचर जो है वो अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं, वो जब वो क्रिएट करते हैं लेसन प्लान्स, और इट हेल्प्स देम टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एज वेल. और बड़ी क्रिएटिव टूल्स हैं इसके अंदर टू मेक कोर्स मटेरियल मोर एक्साइटिंग फॉर योरसेल्फ और फॉर योर learners if you are teacher. Then we have Blackboard. This platform works on any device actually. It's very easily accessible to all students. Usually जो institutes होते हैं ना वो buy करते हैं ये Blackboard. इसको हम actually कहते हैं learning management system. उसमें ज़्यादातर इनका नाम होता है Blackboard. तो नाम Blackboard दिया, लेकिन ये online platform है, and it Blackboard actually gives teachers access to several third-party tools also. तो उसमें ना जितने भी third-party tool है वो उसमें कनेक्ट कर लेते हैं अपनी नीड के हिसाब से या स्टूडेंट की नीड के हिसाब से. Then we have Flipgrid. It's a fun way to get a conversation started. So simply आप एक जनरल टॉपिक पोस्ट कर देते हैं, वो डिस्कशन को फोस्टर करता है आपके सारी लर्निंग कम्युनिटी में जो आपके स्टूडेंट कोहोर्ट है. और बिलीव मी, इट्स अ ग्रेट वे टू गेट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन न्यू आइडियाज, और वो एक्साइटेड हैं बहुत लर्निंग के लिए और इंगेजिंग के लिए अपने पीयर्स के साथ. उनके लिए तो ये बड़ा जबरदस्त जो है ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. कैनवा आई थिंक सबने सुना होगा. अब तो नई जितनी आपकी विंडोज आ रही है उनके साथ ये बिल्ट-इन भी आ रहा है काफी जगहों पे. कैनवा इट्स एन ऑनलाइन ग्राफिक एंड पब्लिशिंग टूल एक्चुअली. ये अलाउ करता है आपको एज अ टीचर कि आप क्रिएट करते हैं बड़े स्टनिंग से प्रोफेशनल क्वालिटी के जो प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स और इंफोग्राफिक्स. फ्री नहीं है सर, ये तो पेड है. इनके लिमिटेड वर्जन अगर आप यूज करना चाहें, अगर आप समझें कि आप इसमें सीख सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं ना,
तो फिर वो उस हिसाब से, और इसमें एक और ये एडवांटेज आपको हो जाता है, अगर आप ग्रुप में लेते हैं तो ये फिर ना उस तरह से, और स्टूडेंट का ऑप्शन भी इसमें इन्होंने शायद रखा था भी रिसेंटली, मैंने लास्ट नहीं चेक किया, ये लोग चेंज करते रहते हैं मंथली वीकली। तो स्टूडेंट का अगर पैकेज अगर आपका होगा ना, आप इंस्टीट्यूट से अगर अपना वो एक इनको लेटर भेज देते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना वो एज ए स्टूडेंट जो है एनरोल है फॉर दिस जी जी बिल्कुल ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर 3 ईयर, तो देन यू रियली गेट बिग बेनिफिट ऑफ गेटिंग। जी जी करते हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिया था टीचर पैकेज, तो वो कर देते हैं डिस्काउंट। एग्जैक्टली थोड़ी सी उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है बड़ी जेन्युइन, अगर हम वो पूरी करते हैं तो दे डू इट वेरी फास्ट एक्चुअली ना, जी उसमें कोई थैंक यू। कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती है। और अच्छी बात ये है कैनवा क्या करता है कि इंटीग्रेट कर देगा आपकी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, प्रेफर्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो जी गूगल क्लासरूम हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, सबको उसमें आपको कंबाइन भी कर देता है, तो वो ग्राफिक टूल्स आपके सारे स्प्रेड हो जाते हैं ऑल ओवर। अच्छा जी, जूम तो जो आई डोंट थिंक दैट दिस हैज टू बी गिवन एनी एक्सप्लेनेशन टू यू गाइस, प्रोबब्ली आप लोग ज्यादा इसमें जो है ना वो हैं, और मेरे ख्याल है आखिर में हम 5 मिनट दे दें डॉक्टर जो हमारे मॉडरेटर हैं, वो इसको बहुत अच्छा बता देंगी। हम तो जो एक साइड पे हैं, आप दूसरी साइड पे हैं, वो मॉडरेटर है। तो बेसिकली इट हैज गेन पॉपुलैरिटी, वो पेंडेमिक में से बड़ी पॉपुलैरिटी की, क्योंकि ड्यू टू इट्स वर्सटाइलिटी एंड एज अ प्रेजेंटेशन टूल और वेबिनार प्लेटफॉर्म्स, और everybody has started using it for the assessment, even for the meetings, for departmental meetings, for curriculum enhancement meetings, इन सब चीजों के लिए, लेक्चर्स के लिए, हर चीज के लिए यूज हुआ है नहीं। और उसकी सिक्योरिटी है, उसकी लाइव वीडियो जो क्लास की फंक्शनैलिटी है, उसके चैट फीचर्स जो हैं, जो अभी हम यूज भी कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल और एजुकेशनल इंटरेक्शन, it really makes Zoom a very useful distance learning tool. Last but not least, Microsoft Teams. So Microsoft Teams brings बड़े ही जो है ना वर्ल्ड के जो सेवरल जो आपके बेस्ट जो है ना ऑप्शंस हैं, वो अंडर वन रूफ ले आता है। वो आपको शेयर करना है, स्क्रीन भी, आप नोट्स, आपकी प्रेजेंटेशन भी आप कंडक्ट कर रहे हैं, you can promote chatting also, and bring everyone together through video conference is possible. So that's why we have to just keep in mind. But the most important thing, the key points out of these all discussion that we had in this particular slide, क्या है सबसे जरूरी चीज कि भाई कुछ भी आप इनमें से यूज करते हैं टूल्स, आपको जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो तो हमेशा ओपन रखनी है, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, या आप अपने टीचर के साथ, जिसके साथ भी इंगेज है, while utilizing these particular set of package of versatile जो आपके जितने भी पैक हैं, पीयर डेक है, आपका गूगल है, जो भी है, इन सबको रखने के लिए है ऑन ऑन टॉप ऑफ नॉच जो है ना, आपका जो जो की पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, तो आपकी कम्युनिकेशन आपको ओपन रखनी होती है इसमें। और लर्निंग टारगेट्स बड़े स्मार्ट रखने हैं आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वही रखने हैं जो आप अटेन कर सकें, बड़े स्पेसिफिक हो, जिसको आप मेजर भी कर सकें, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। वरना तो ये तो अगर आपने ग्रुप बना दिया चैट पर, आपने बोला भाई 3 दिन तक चल रहा है सेशन, ऐसा नहीं होगा ना, उसकी लिमिट होती है। फ्री जूम तो वैसे ही 45 मिनट्स के बाद बंद कर देता है। जो आपका रजिस्टर्ड वर्जन है, आपको जो है वो जस्ट कीप्स यू जस्ट बीइंग गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू यूज इट फॉर लॉन्गर आवर्स, फॉर लॉन्गर टाइम। सो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बड़े ही स्पेसिफिक रखना है, बहुत जरूरी है, वरना आप जो है ना वो बस इधर उधर ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड व्हिच will let you know what are the main components and related TEL tools with those main components. Actually, we know that the physical part is very important, physical segment, and for relevant tools for this components are many. Strong वो एक ऐप है that records your workouts, और स्टूडेंट और आपके कुलीग्स या आपके जो भी है लर्नर, अगर आप उनसे लॉन्ग रन में आप चलना चाहते हैं या पर्सनल अपने यूज के लिए रखना चाहते हैं लर्निंग के लिए, तो आपको अपना फिजिकल एस्पेक्ट भी जो है ना वो अपनी लिस्ट में रखना है। तो उसके लिए इट वुड हेल्प यू, इट क्रिएट्स योर रूटीन्स एंड ट्रैक्स योर प्रोग्रेस आल्सो ओवर टाइम। देन वी हैव इसमें ये नाइक रन क्लब और ये फिटनेस पे लाइक कुछ लोगों ने तो यूज किए हैं, वरना आप उसको यूज कर सकते हैं मोबाइल पे, और जिसकी जो चॉइस हो, डेली योगा भी है किसी चॉइस में अगर आता है तो दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच डिटेल, बिकॉज वो अगर आप और ये फ्री है, जो जिसमें मैंने भी आपको शो कर रहा हूँ, ये अब तक तो फ्री थे, लास्ट नाइट तक तो मैंने चेक किया था। तो
अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जनाब, आपका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर स्टूडेंट्स अगर आप अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो रखना चाहते हैं कि भाई वो साइकोलॉजिकली मेंटल वेलबींग उनकी जो है ना वो भी जो है ना compromise ना हो, तो काम जो है, it's an app that if you need help reducing your stress and anxiety, so it's very good help. And then Mindshift actually it was developed by an organization, Anxiety Canada के नाम से organization है, and वो है असल में Anxiety Awareness Non-Profit Organization. What does it do? It actually uses cognitive behavioral therapy (CBT) to teach you relaxation skills and tips. And then there's a Quit Now. It's a very popular app actually designed to help you quit smoking or for good. So the app tracks your various achievements, including how many days you have been smoking, and so on. So then we have component of social connectedness. So once a person has worked for his health, from the physical aspects has been dealt well and mental aspect already been dealt well, then also have made us a healthy social circle utilizing Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. And I believe I need not to spend any much time in explaining the details of these social platforms, because now the time arrives for us to jumping into educational environment. And or you may call it online resources related with published research and prominent literature. So let's see. The top rated ones are PubMed. It's a database. आप बहुत से लोगों ने यूज किया भी होगा मेरा ख्याल है, मुझे अंदाजा है आप लोग रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे to any extent. It's a database that includes over 33 million citations for the literature related with the biomedical topics और आपकी research needs के लिए. So it allows you to read the newest research and trending articles. और अगर आपने इसको यूज नहीं भी किया है, अगर आप रिसर्च नहीं भी करते हैं, आप इसको जो है सर्च करें पबमेड को, उस पर कोई टॉपिक अपना इंटरेस्ट का जो है वो लिखें, उस पर जितनी रिसर्च है पास्ट में प्रेजेंट हो रही है और आगे जो भी है वो सब आपकी स्क्रीन पे होगी. Another important one is UpToDate. This is a part of Walter Kluger, provider of information, a big name, Walter Kluger. So this software क्या करता है कि clinicians के लिए वर्ल्ड वाइड, और ये स्टार्ट हुआ 1836 में. इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट हेल्थ न्यूज जो कि एविडेंस बेस्ड है, इधर उधर के नहीं हाँकते ये लोग, बड़े एविडेंस बेस्ड जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. मेड्स के सबने नाम सुना होगा. इट्स एक्चुअली वन ब्रांच ऑफ ए फैमिली ऑफ हेल्थ वेबसाइट्स, जिसमें वेब एमडी भी है, जिसमें मेडिसिन नेट भी है. तो अगर आप अपनी ये हैबिट बनाते हैं कि मेड्सकेप को आप चेक करते रहते हैं रूटीन में, so it keeps you updated with the breaking medical news of that particular day also. And you can customize अपना news feed जो है उसमें अगर आप confine कर देंगे geographical regions है, तो वो आपको आपके ही geographical region के हिसाब से ही सारी updated details. So membership is free and you get access to community. एक community होती है जिसमें आप question queries भी डाल सकते हैं, medicine की related, health professional related जो भी queries हैं, तो और अगर आप चाहें तो support offer कर सकते हैं. और बड़े पजलिंग से केसेस होते हैं उसमें, अगर आप चाहें वो डिस्कस भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं विद सम न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल देयर. तो WHO सबने ही सुना हुआ है, तो इसकी तो कोई डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है कि, लेकिन दिस इज योर गो टू रिसोर्स है आपका ना. अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आप सारी कोविड के लिए आजकल तो इसका मेन जो सेक्शन है 80% 70% जो है वो डील कर रहा है कोविड-19 की के लिटरेचर से. बट टाइम हो तो इनको जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए. अब हम देखते हैं कि भाई इन सब चीजों की टीएल की एप्लीकेशन भी तो कहीं होनी चाहिए ना, कहाँ है. अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम देखते हैं द स्टेक होल्डर्स लाइक स्टूडेंट्स फॉर टीचर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. सो फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन specifically, TEL's applicability is multifold actually. It actually starts from very beginning of the academic year, जहाँ आप टारगेट करते हैं करिकुलम प्लानिंग को, or for curriculum reforms, also new technology is being utilized. And for example, we know that curriculum development or reform is a teamwork. We all believe is a teamwork. So if this all is to be done online or even within the same institute, all members may stay and may share the expertise, kind of notion. So they can utilize Zoom, WebEx, and any other online meeting tools. अच्छा, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एजुकेशन एनवायरनमेंट तो अपग्रेड अब होना ही है, हर इंस्टीट्यूट में होता है. तो especially for letting students learn for the performance skills,
तो भाई क्लिनिकल स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, ताकि वो जो सारे रिलेटेड सिस्टम्स हैं, बॉडी सिस्टम्स हैं, वो एग्जामिनेशन करने उनको आ जाए, उसमें पैल्पेशन है, उसमें स्कल्टेशन है, so on. So technology in the form of simulations and mannequins are in place there, actually commonly used. और once the institute are capable, अब उनका करिकुलम तो रन करना शुरू कर दिया उन्होंने, अब उसको रिवीजन भी तो देंगे, उसको करिकुलम रिफॉर्म्स भी करेंगे, जो भी एक्सटेंसिव जो एवोल्यूशन हुई है वो फिर अगेन कंडक्ट करने के लिए टी टूल्स जो हैं दे कम इन वेरी हैंडी in the form of various apps like Google Forms that are being utilized to tackle perception and opinion of the stakeholders. एक और कंपोनेंट होता है जनाब आपका जो है ना, जहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का है. It's a very important domain where TL is extensively utilized. Again, in the form of online survey forms like Google Form, SurveyMonkey, ये आप लोगों ने सुने होंगे मेरा ख्याल है, इनको जरूर एक्सप्लोर करें. सर्वे स्पैरो भी है, and many more. It helps you collect information regarding key performance indicators as well. Last but not least, the area of research has been extensively being supplemented, as currently there are various search engines available, as we just have talked about. अभी हमने डिस्कस किया PubMed को, Science Direct है, Scopus है, और many more. So, and at the same time, there are multiple analysis tools. वो रिसर्चर जो यूज करते हैं, डेटा ले लिया, कलेक्ट कर लिया, उनको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए, तो वो स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस से, जिसको हम कॉमनली कहते हैं SPSS. मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारे ऑडियंस में से कोई SPSS नहीं सुना हो. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हैं जो टूल्स हैं, they have really gone beyond our imagination. We have apps like Otter AI. अभी Otter AI is a tool. क्या करता है कि आपने डेटा ले लिया, आपने वो जो है वो मिनी इंटरव्यूज कर लिए, या आपने फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लिए, इंटरव्यूज आप कलेक्ट हो गए, डेटा आप सामने वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास, या ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है आपके पास, थ्रू जूम रिकॉर्डिंग आपने फोकस ग्रुप डिस्कशन किए थे स्टूडेंट के, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है. अब वो डेटा है आपके पास ऑडियो विजुअल फॉर्म में, आपको एनालिसिस करना है तो आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए होगा. तो Otter ID क्या करता है कि इट ट्रांसफॉर्म्स ऑल योर ऑडियो डेटा इनटू ट्रांसक्रिप्ट. वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाता है. you still have to go through all the transcript that's been provided and produced by Otter AI, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 19-20 गलतियां कर लेता है अभी भी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आप उसको थोड़ा सा ट्यून अप कर लेते हैं अपने मैनुअल चेकिंग के साथ. So now we are reaching to our almost end of our these slides, and now we will see that how does TL impact on educational environment. इसके आंसर के लिए क्या है भाई, फर्स्ट वी मस्ट डिफाइन के who or what are the characteristics or the real players of any educational environment in general and medical education environment in particular. We can see that for the institutions, TL जो है वो opportunity provide कर रहा है तमाम institutes को for approximating their learning outcomes. वो उनको reach out करने में, अपनी learning outcome को reach out करने में support करता है. इसके साथ साथ we can see for the curriculum, TL supports in providing evidence-based teaching and assessment instruments, for example, simulation and usage of mannequins for students' learning. At the same time, they are being used for students' evaluation during OSCE exams also. TL doesn't stop here. हमें ये समझना है कि यहाँ पे इसका इख्तिताम नहीं हो जाता. It's really potential impact जो है वो नरिश करता है और नर्चर कर रहा है हमारे टीचर्स को, लर्नर्स को, एबिलिटीज को. And this one again done with the usage of multiple advanced devices. वो जब वो चेकआउट भी कर जाते हैं अपने कोर्स से, प्रोग्राम से, उसके बाद भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेरियस एप्लीकेशंस हैं, एवरीडे लाइफ में भी उनकी यूज हो रही हैं, चाहे उनकी अपनी पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ क्विटिंग एनी हैबिट है, या उनकी पर्सनल मैनेजमेंट है रिलेटेड विद फिजियोथेरेपी और for personal health, for psychological domain, physical domain, or even with the social areas. Those are still be there. Even you have, or your student has been checked out from the course. So now we are going to have I think this must be the last one, or maybe after this we will have another break. अब मुझे उम्मीद है कि ये तो आप सभी बता देंगे. ये तो सबको पता है, आपने तो ये ऐसे लगा दिया. अब मैंने सोचा कि पिछली वाली जितनी भी हैं उसमें सब कंफ्यूज हो गए. ये और ये सबको पता है ना.
अच्छा, जिसको नहीं पता कम से कम वो शुड बी बोल्ड इसका एनफ टू जवाब रेज वही हैंड। देगा जिसको नहीं पता। हाँ, इसका जवाब वो दे जिसको नहीं पता। तो कोई अगर है ऐसा तो रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ। जिसको नहीं पता वो गलत ही बताएगा। नहीं, वो गलत बताए। मुझे नहीं तुम पता। देखिए कितना गलत बताते। अच्छा चलो, ये तो सबको ही पता है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री कोई बताएगा? जो मशहूर जमाना है, मतलब इसके पीछे वो है, हिस्ट्री है, स्टोरी है, सबको पता है, नाम क्या है, कहाँ है। सर स्टोरी का ये नहीं तो पता। अच्छा, नाम पता है, क्या कहते हैं? सर हिरन मीनार है, ये जो हिरन शेखुपुरा के मीनार है, पास है। शेखुपुरा के पास है जी। ये 1606 में बनाया गया था, 1606 में। वो जो जहांगीर मुगल बादशाह एम्परर ने। जहांगीर ना, उनका हाँ जी, हिरन था। जहांगीर। जहांगीर का हिरन का नाम क्या था? जो बताएगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आज। सर गूगल पे लिखा है मंक्स राज। सर आर्टिफिशियल It's इंटेलिजेंस। like a part you starting plagiarism. सर So, नहीं नहीं, आप टेक्नोलॉजिकली इनहेंस लर्निंग पढ़ा रहे हैं और हम उसका फुल यूज कर रहे हैं। वो मैं भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो प्रेजेंट करना है, आपको प्रिपेयर करना ठीक है सर। है। सो इंशाल्लाह। तो डॉक्टर पुरतले ने यस, रेफरेंस भी दिया है। रेफरेंस दिया जनाब है। उन्होंने तो पहले हाँ ही। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा है जो यहाँ नहीं गया हो? चले, बड़ा दिलचस्प होगा अगर मैं कोई ऑडियंस में से ऐसा हो जो यहाँ नहीं गया हो, हाथ रेस कर दे, सर मैंने अनम्यूट कर दे। नहीं सर। कौन नहीं गया? हिमायतुल्लाह भाई, जी सर। डॉक्टर जी हिमायतुल्लाह सर मैं नहीं नहीं गए? गया। नदीम यार अच्छा, खान, आपको ये पता तो था ना? नदीम यार सर खान। पता भी नहीं था। पता जी भी सर नहीं था, पता है, आपने मेरे खामोश रास्ते रह में के ना आता अपनी है। बचत कर दी। I've never been to that place. सर वैसे जो लोग नहीं गए उनके लिए Exactly. मशवरा है कि जिस दिन बहुत ज्यादा क्लाउडी डे है उस दिन जबरदस्त जाए। जगह है, इसके जो ट्रीज हैं दे आर सो ब्यूटीफुल एंड वेरी एक्सीलेंट। जबरदस्त जगह है। और बोट की राइड जरूर कीजिएगा जी। बड़ा तेज चलाते हैं, उनको जरा कह दीजिएगा स्लो चलाएं, क्योंकि वो बोट चलाते हैं बड़ी तेजी से ना, वो यहाँ से घूम के यहाँ आके खत्म कर देते हैं। तो बोट राइड जो है वो जरूर करनी है इसमें, और जरूर जाएं जो नहीं गए। तो रास्ते में वहाँ इंशाल्लाह। पे एक दो पकौड़ा शॉप है, उसके पकौड़े जरूर एंजॉय कीजिएगा। सो भाई, दिस इज गोइंग सर टू बी अवर पकौड़ों समरी के स्लाइड। अलावा भी कोई अट्रैक्शन है वहां पे? सर अब डिपेंड करता है। अभी तो पकौड़ों आपको के देखा अलावा कोई है, अट्रैक्शन? आपको बताया गया कि अगर वहां पे ये जो है एक तो ग्रीनरी जबरदस्त है, आप जाएं। अब सर अट्रैक्शन ऐसी जगहों पे क्या होगी? 1606 में एक चीज बनी है, और वो बनी है हिरन की याद में। तो आपको अगर 10-12 मिनट मिल गए और आप जरा फील करेंगे, आउट ऑफ सिटी जाके थोड़ी सी एक वो फीलिंग लेंगे कि आप जरा शोर शराबे से बाहर आ गए, तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि अगर आपको वो टच जो है, वो फीलिंग जो है आपको वो अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इंशाल्लाह। सो जाइएगा, फिर बताइएगा नेक्स्ट सेशन में नहीं आपसे सर, लेकिन पूछेंगे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही मरे हुए हरम के मज़ार पे जाना और उधर जाके थोड़ी देर के लिए बैठना, ये तो बहुत ही खराब बात है। नहीं, हमने जाके वहां पे मजावर नहीं बनना है ना वहां पे फातिहा पढ़नी है। हमने जाना है पानी फोटोग्राफी कर ले अगर दिल चाहे, घूम ले, इसलिए से नहीं जा रहे कि वो मरे हुए। सर आपने तो सारा वो है ना, डायमेंशन ही चेंज कर दिया वहां का। नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सिर्फ जाएं, सर बोट अल्लाह करे की हम राइड लें, हम इंसानों मेरी को बचाने रिकमेंडेशन में पे रास्ते में पकौड़े भी खाएगा। नहीं, you'll enjoy, definitely you'll enjoy. So I think back to our presentation, we have seen there has been so much talk about the elements, and for regulators we knew that there's so much work required to be done. Its capabilities are enormous while targeting for the attitudinal, behavioral, and performance skill, what we also know as a procedural skills benefit, can be well taken care. Their benefits are again multiple, and as a larger two groups division, we can make them like in primary and auxiliary benefits. And now coming to online and distance education, particularly this set of package is very important. But again, होता ही है कि देखें, there is no finish line. There's no finish line in the race for searching for and using for
these apps or TEL tools. अब वो तो इतनी बेनतहा अनलिमिटेड एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि आप सबको नहीं कर सकते। तो होता है कि ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आप अगर किसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन, तो आप चूज करेंगे आपकी रिसोर्सेज क्या है डिपार्टमेंट की, आप कौन से फ्री टूल्स फ्री सोर्सेज यूज करेंगे या पेड टूल्स, आप जो स्पेशली ब्लैक बोर्ड के लिए आपको पे करना पड़ता है, आप कौन सा LMS सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज करते हो, तो उसमें आप जो है यू हैव टू डिग डीप डाउन to know about its do's and don'ts. और बहरहाल ये एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है जो आपको एक आइडिया देती है एटलीस्ट कि ये चीजें हैं, और इससे मिलती जुलती चीजें। जूम बड़ा कॉमन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत कॉमन है, कैनवा बहुत कॉमन है, गूगल क्लास इज सो कॉमन। तो इस तरह से ये लिस्ट जो है ना, यही नहीं है कि दिस इज नॉट एक्चुअली द ओनली लिस्ट which can be used as a list of tools for online distance education. This is only just to give you a glimpse कि उसमें होता क्या है, और आप इससे एसोसिएटेड और इससे रिलेटेड सिमिलर दूसरी अपनी पसंद की जो आपको यूजर फ्रेंडली लगे एप्स आप यू कैन जस्ट यूटिलाइज फॉर योर टीचिंग और लर्निंग फॉर योर स्टूडेंट्स और फॉर योरसेल्फ एज अ लर्नर। मेन कंपोनेंट्स जो थे उनके रिलेटेड टूल थे फॉर फिजिकल, हमने देख लिए डिटेल में, साइकोलॉजिकल के थे, सोशल कनेक्टेडनेस के, और एजुकेशनल के थे जहाँ पे मिस हो गए, यहाँ पे जगह नहीं थी। अच्छा, इम्पैक्ट्स भी हमें देखने के एजुकेशन एनवायरनमेंट में क्या है। अच्छा, इस स्लाइड को जरा ध्यान में रख के ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो नेक्स्ट आपको मैं डिटेल बताता हूँ अभी कि व्हाट यू हैव टू डू विद योर प्रेजेंटेशन। दैट विल बी वेरी ब्रीफ टाइनी शॉर्ट प्रेजेंटेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you take part, you do it, because it's gonna considered and being used for you as your formative assessment marks. इम्पैक्ट्स भी देखना जरूरी है कि भाई इंस्टीट्यूट में होते हैं तो उसमें करिकुलम है, टीचर्स लर्नर के लिए क्या इम्पैक्ट है, फैसिलिटी जितनी भी है, सोशल एनवायरनमेंट को किस तरह से वो प्रोवोक करती है, टारगेट करती है, और वो एनवायरनमेंट किस तरह से जो बिल्डअप होता है, तो ऑल दीज थिंग्स। सो yeah, this slide is for your references if somebody is like keen to know more about the work being presented. और अगर आप लोग थक जाते हैं and you feel tired and for trying and achieving anything, क्योंकि नई चीज को सीखने में बहरहाल टाइम लगता है, फेलियर्स आते हैं, and if you feel exhausted, तो अपने आप को जरा कहते रहा करें ना, जैसे एक होता है सेल्फ रिपीटेशन, अपने आप को कहते रहे कि I didn't come this far to quit. तो किसी भी स्टेज पे, किसी भी कोर्स में, किसी भी जगह पे किसी नई चीज को सीखने में बहरहाल टाइम लगता है, फेलियर्स आते हैं, but the important Thank thing you is for the just keep trying. slide. Sorry? Thank you for the slide. It was very well needed. Okay. Yes, it is. It is required for everyone because आप स्टेज पे हैं, कोई एमफिल का स्टूडेंट है, कोई मास्टर्स का है, फेलोशिप का है, तो हर्डल्स होती हैं या हमने बना ली होती हैं। तो you have to keep yourself every day in the morning, even at any time you like. You keep telling yourself that I didn't come this far to quit. And when Thomas Edison has been like marvelous words, when you have exhausted all possibilities, remember this, you haven't. It's true actually. So before we start our next session, that will be presentations from all you guys. अब इस पे तो कोई ये ना बोले कि मैं नहीं गया हूँ या मैं नहीं जानता इस जगह को, ये भी मुझे थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा। इस्लामाबाद के करीब है, करीब से मतलब आई मीन विद द डिस्टेंस ऑफ तकरीबन 350-400 किलोमीटर से इस्लामाबाद से। वैली है कि नीलम के से वैली। नाम स्टार्ट होता है, अच्छा, नहीं, के से स्टार्ट होता है वैली का नाम, की पे कलाम। खत्म होता है वैली का नाम, कलाम। नहीं जी, Kalam. नहीं टी जी, पे। कलाम में आखिर में एम आता है और शायद टी और एम में थोड़ा सा फर्क होता है मेरा ख्याल। टी आता I've है कि heard. टी आता है? कुमरात लास्ट वैली। में टी है, टी कुमरात। for television. Kumrat. हाँ, good. एग्जैक्टली जनाब, ये गया नहीं हूँ लेकिन मैंने व्लॉग बहुत देखी। इसका देखते हैं। असल में है तो ये कि अपर दी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहां से जो खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंस में, और
कुमराट वैली, कुमराट भी कहते हैं, कुमराट भी कहते हैं, और बड़ा स्पेक्टेकुलर नेचुरल अट्रैक्शन है। और ये अगर कोई अल्टरनेटिव साउदर्न रूट से आ रहा है ना, तिमरगेरा डीर से, थ्रू नॉर्दर्न रूट वहां से भी एक्सेसिबल है, कालाम से आते हुए। और इस्लामाबाद से थोड़ा लंबा पड़ जाता है, लेकिन 12 लोग तो जाते हैं। 350 और 360 अराउंड समथिंग लाइक किलोमीटर्स है। तो जी जरूर जाया कीजिए अपनी ये मुल्क की जगहों पे घूमने। अच्छा, अब दिस सेशन would conclude, and now I would ask our moderator to help me out here. इसमें क्या करना है आप लोगों को, ये मैंने बड़ा सिंपल सा आप लोगों के लिए एक ना असेसमेंट बनाया। आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आप लोग ऑडियंस में तकरीबन है 20 या 21-22 मेरे फेलोज हैं इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मिनट से आप सबको प्रिपरेशन के मिलेंगे। आप लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट, वेबसाइट्स, ऑनलाइन लिटरेचर, आपका कोई बुक में कहीं नोट्स लिखे हुए हैं वो यूज कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस यूज कर लें, कोई डॉक्यूमेंटेड मटेरियल आपके पास पहले ही पीडीएफ में सेव हुआ है, अगर आपने यूज किया है, आपने कहीं भी वो है आपके पास, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम 5 मिनट रख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप इसमें चाहे तो हाथ से अपने नोट्स डायरी पे लिख लें, ठीक है, तो उसी में से आप पढ़ के बता दें, या चाहे तो आप पीडीएफ बना लें, वर्ड फाइल टाइप कर लें, आप स्क्रीन पे शेयर कर लें, जो आपको कन्वीनियंट लगे। हाथ से भी नोट बना लें, पढ़ के भी वर्बली भी आप सुना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपने पॉइंट्स, आप उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर इफ यू कैन जस्ट टाइप योर मटेरियल और कंटेंट ऑन अ वर्ड फाइल और प्रेजेंटेशन पीडीएफ, फ्रॉम हेल्थ जर्नल या एनीथिंग फ्रॉम आवर कहीं से टॉपिक भी, और एनी सब्जेक्ट। कहीं से भी, कहीं से भी। उसमें आपने ढूंढना क्या है, असल चीज है ये, उसमें आपने किसी भी जो हेल्थ केयर और हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में हेल्प करता है, टीएल का कंपोनेंट आपने बताना है कि कौन से कंपोनेंट में वो यूज होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और स्टार्ट तो आप टूल से ही करेंगे ना, कि एनी पर्टिकुलर टूल, you will just speak like 1 or 2 sentences, you will say its name, and you will say its applicability, its usage, और when did it start, अगर आप इसे ढूंढ सके कब स्टार्ट हुआ, तो उसकी यूजेबिलिटी हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या है, पेड है या फ्री है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं, आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने यूज किया है तो आप वो बता सकते हैं। अल्टरनेटिवली ओके, यू आर किसी आल्सो हाँ किसी हाँ टीईएल प्लीज, टूल पे हमने बनानी है प्रेजेंटेशन, और उसका हमने इम्पोर्टेंट बताना है कि उसका फायदा क्या है, हाँ। कहाँ यूज होता है, मैं कब आपको पहले ना इसका प्रिपरेशन का, प्रेजेंटेशन का, और आखिर में इंटरेक्शन होगी, उसको पूरी आपको डायनामिक दे दूं, 1 मिनट लूंगा, फिर आप जितने क्वेश्चन चाहे मुझसे करें, ठीक है। जी। तो आपने एक टूल चूज कर लेना है, डिवाइस चूज करना है, या कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी जो है ना आपका वो ऐप हो, फिर आपने उसमें बताना है कि भाई कब यूज हुआ, कहाँ से बना, पेड है, फ्री है, और आपने यूज किया है तो अपने उस पर रिफ्लेक्शन दें, उसके उसके मार्क्स ज्यादा है अगर आप रिफ्लेक्शन देंगे। आप उस पर क्रिटिकली अगर आप एनालिसिस करेंगे कि इसमें ये तो सही था, ये सही नहीं था, उसके आपके लिए मार्क्स हैं। और अगर कोई भी जो है ना चाहे, तो हमने रिसोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर किया था, अगर आप सबके पास वो रिसोर्स मटेरियल पहुंचा है, 3 उसमें आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे भी काम आएंगे, पढ़ते रहिए। उन 3 आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल की अगर आप समरी भी हमें बता देंगे ना, जबानी या देख के या प्रेजेंट करके स्क्रीन पे, तो दैट वुड आल्सो बी फाइन फॉर मी। आप किसी भी एक आर्टिकल की जो 3 आपसे शेयर किए गए थे, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे कि आप सर्च अभी नहीं करना चाह रहे टूल के बारे में, ऐप के बारे में, उसके डूज डोंट्स, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी, उसको आप नहीं लिखना चाह रहे, तो 3 आर्टिकल है आपके पास जो रिसोर्स मटेरियल के तौर पे वी हैड शेयर्ड विद यू अर्लियर। आप उनमें से किसी एक आर्टिकल की जस्ट प्रोवाइड मी समरी ऑफ लाइक 5 to 10 lines, कि आर्टिकल हैज दिस टाइटल, what done, the authors were from this country, this was the name of the author, it was conducted, this study was conducted in this particular year, which place it was being held, what were their findings, how did they conclude it, I mean how did the authors conclude it, and what is your reflection upon that article. आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी ऑनलाइन टूल के बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हम आपको देंगे 5 मिनट देंगे, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट का नंबर बहुत लंबा है, और आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम देन बीइंग ग्रांटेड। आपका मेरे ख्याल में इसके बाद एक ब्रेक है, फिर दूसरा सेशन भी आपका स्टार्ट होना है। सो मैक्सिमम 5 मिनट आपकी प्रेजेंटेशन के लिए होंगे। आप स्क्रीन शेयर करें, आप वर्ड फाइल उस पर पावर पॉइंट चाहे कोई 1 या 2 स्लाइड बना लें, पीडीएफ में बना लें, वर्बली आप बता लें, रीड कर लें अपने नोट्स में से, डायरी में से, एवरीथिंग इज अलाउड।
you have to communicate, you have to speak up, you have to say something and that you are going to present. अच्छा, उसमें इंटरेक्शन होगा जो आप खत्म कर लेंगे 5 मिनट के बाद, हम 1 मिनट का टाइम देंगे। कोई भी पार्टिसिपेंट अगर उस पर कोई कमेंट करना चाहे या कोई क्वेरी जो उसको समझ में नहीं है या सजेशन देना चाहे आपके वर्क पे जो आप प्रेजेंट करेंगे। तो is it clear that what you are going to do? Then our moderator, I would ask our moderator to come in and play a very important role by letting one by one you guys to show up if you have your presentation or you want to speak one by one for maximum 5 minutes. Or as this session is being recorded with all your permission, so we would just take note of your points that you are going to prepare, present, and the way you will be dealing with the interactions. Everything could be, letting you have marks or whatever. Clear है? हाँ जी सर, क्लियर है। Yes, Clear sir. है। जी सर। तो हम 5 मिनट का टाइम स्टार्ट करेंगे अब। 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर देंगे और लेट मी मेक माय टाइम हियर। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ ले, क्योंकि वो 5 मिनट का टाइम ऐसा ना हो कि फिर आपके लिए शॉर्ट हो जाए आपकी प्रिपरेशन के लिए। मेरे ख्याल में क्लियरली सबको समझ में आ गया है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5 मिनट का टाइम ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। आपके 5 मिनट अब स्टार्ट होगा प्रिपरेशन की।
20 seconds remaining. I hope you all must have just been done with your preparation. भाई जितनी भी जिसकी प्रिपरेशन हो गई है अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज मोर, और अगर हम 5 मिनट्स भी देंगे अगर वो प्रेजेंटेशन के, तो इट गोना कॉस्ट अस मच टाइम. योर टाइम इज अप. Could you just please stop preparing so that we can start asking any volunteer to start? जी सर, डन. Alhamdulillah. I hope everybody has already completed preparing. So किसी ने PowerPoint की स्लाइड प्रिपेयर की है? जी सर, PowerPoint. Right, good. और किसी ने वर्ड फाइल में या PDF में कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? You can all unmute yourself because this session is going to be, interactive. I would request our moderator to unmute all of our participants, or if you possibly can do it yourself. Yes, I think it's better everyone does it themselves. Right, good. So आप सब अपने आप को ना unmute कर लें, ताकि अगर आप कोई query करना चाहें, कोई comment करना चाहें, तो फिर that would be possible. अच्छा, मैं पूछ रहा था कि हमारे पास PowerPoint तो है. Dr. Salman has just said this. Yes, he has prepared PowerPoint. किसी और ने PowerPoint बनाई है? कोई slides? जी सर. 2, 3, 4, 5 स्लाइड. अच्छा, जी सर. नाम? डॉक्टर लारेब. डॉक्टर लारेब आपने बनाई है. वेरी गुड. और कोई हमारा फेलो? I have made one too. Okay, very good. So we have got 3 participants. I have made one Is there too. anyone? Okay, very good. किसी ने वर्ड पे कोई वर्ड फाइल या सिर्फ PDF बना के प्रेजेंट करना चाहेगा? कोई है ऐसा? मतलब आप सब लोग माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं. वर्ड फाइल और PDF को तो कोई लिफ्ट ही नहीं है, डायरेक्ट जंप कर रहे हैं PowerPoint पे, माशाल्लाह. ओके, वेरी गुड. और कोई ऐसा है जिसने अपने मतलब मैनुअली लिख लिया नोटबुक पे या डायरी में, और उसको पढ़ के Yes, बोल sir. के? Yes. Okay, we have one participant. So we'll start. Who gonna be volunteer to start first? आप लोगों पे मैं है. कर देता हूँ. लेकिन कुछ करें. हाँ, टाइम का ख्याल रखिएगा. 5 मिनट. I will note down your time. शेयर अभी हो नहीं रही सर, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ नहीं है इसमें. हाँ, वो आपको मॉडरेटर स्क्रीन शेयर अलाउड कर देंगे. मैं Dr. आपसे Saif, you can allow. करूंगा, और then you will be able to start sharing your Just a screen. second, sir. टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज. जी सर. 5 मिनट से ज्यादा नहीं. मैं यहाँ पे टाइम भी देख रहा हूँ, और इसके भी मार्क्स होंगे अगर आप टाइम से आगे चले गए. ख्याल रखिएगा. सर आप कर सकते हैं, आप देखें. अच्छा, मैं एक मिनट. देखिए डॉक्टर सलमान. जी मैं कर रहा हूँ. Right. And once we will have your presenter on screen, your time will start then. आप इसको वो कर लें स्लाइड शेयर, ताकि फ्रॉम टाइम आपका स्टार्ट कर दें. जी सबको Oh, नजर looks आ रहा very beautiful, माशाल्लाह. Okay, your time starts now. ओके सर. तो आज की मेरी प्रेजेंटेशन है जो मैंने टीचिंग टूल के तौर पे जिस चीज को यूज किया है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज डॉक्टर सलमान परवेज राना, एंड द टूल I basically I've used many tools, but today I am talking about the tool which I am using for learning is YouTube, which is an online video platform. और इस पे हम लोग फ्री टू यूज है, और हर तरह की हम इस पे इंफॉर्मेटिव टीचिंग वीडियोस या टेक्नोलॉजिकल वीडियोस और मेडिकल रिलेटेड हर तरह की हम वीडियोस इस पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और इससे अपनी लेक्चर्स में हम ऐड भी कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को इससे सीख के. तो इसके साथ हम अपना चैनल बना के इसको हम टीचिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने इसके ऊपर वीडियोस पोस्ट करके इसको हम एज अ मॉनिटरी तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. स्टार्टेड इन 2005 फ्रॉम USA.
पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कोई 5-6 साल पहले यूज हुआ था। पहले लोगों को इतना पता नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे ऑनलाइन वेरियस टूल्स हैं, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर यूज होता है वीडियो लेक्चर्स स्टडिंग के लिए वो यूट्यूब है। इजी टू यूज है, फ्री है, हैंडी है, यूजर फ्रेंडली है। तो बेसिकली अगर कुछ चीज़ सीखनी हो तो मैं इसको यूट्यूब को यूज करता हूँ बेसिकली अपने लेक्चर की इंफॉर्मेशन इंप्रूव करने के लिए, या टीचिंग करने के लिए, या फेस इन कैम टू फेस कैम के साथ अगर लेक्चर कोई मैंने इस तरह बनाना हो तो इसको मैं फिर यूट्यूब को यूज करता हूँ एज ए टूल। या अपने किसी पावर पॉइंट लेक्चर में या किसी लेक्चर में अगर मैंने क्लिप्स लगाने हो तो मैं मेरे पास वो बैंडीकैम सॉफ्टवेयर, उससे मैं क्लिप्स इसके स्पेसिफिक लेके तो उससे मैं रेफरेंस दे सकता हूँ बच्चों को ये कोई चीज़ अगर मैंने करानी है। ये बेसिकली एक टूल था मेरे से। तो मुझे जो समझ आया था कितना प्रेजेंटेशन बनानी, तो मैंने इस पे ये बनाई है। No, it's very impressive. You've covered all aspects almost. And you still have 3 minutes left if you want to add anything more. Otherwise, we will just let our participant to just speak about what you have just presented. जी सर, बस इट्स ओके, फाइन। Are you done, huh? So, okay, anyone, any participant? First of all, let me thank Dr. ये सर Salman. इसमें वीडियो 30 का मैंने बनाई थी, ये मैं ऑन कर एक मिनट भूल गया था बताना। अच्छा। सर मेरा अभी रेडी है, डॉक्टर कुरतुलैन। ये इस तरह से हम right. You'll be पिक्चर इन next. पिक्चर करके इसको क्लिप भी बना सकते हैं इस तरह से। Good. तो ये आप मतलब जो शेयर कर रहे हैं ये आपकी अपनी काविश है, आपने YouTube वीडियो क्रिएट की जो आप अभी शो कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी होती नहीं, है मेरी उसमें आप वीडियो मेरी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर हम कोई लेक्चर, अगर हमें किसी से रेफरेंस देना हो, हमने किसी लेक्चर का वीडियो 20-30 मिनट्स की है, उसमें से कोई पर्टिकुलर अगर हमने क्लिप कोई रेफरेंस के तौर पे देना हो तो उसको कट करके हम अपनी वीडियो के साथ इस तरह बोलते हुए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने ऑनलाइन देना हो लेक्चर, जिस तरह मेरी आपको वीडियो के ऊपर पिक्चर इन पिक्चर आ रही है, तो मैं वो उस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ उसको लाइव के अलावा। Point is well taken. So, may I ask something? So, when you just start searching for a particular topic on YouTube for your learning or for using for your colleagues, do you think there would be any copyright issue, or is there any copyright issue if we post it not for the lectures? अपने लेक्चर में अगर हम यूज कर रहे हैं कॉलेज के अंदर या किसी ऐसे पोर्टल पे जो हम पब्लिश नहीं कर रहे, तो फिर तो कॉपीराइट इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसे पोर्टल पे हम यूज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही, अगर मैं इसको डाल दूंगा किसी और अपने चैनल पे तो वो कॉपीराइट इशू आ जाएंगे। या अगर मैं इसको पब्लिक फोरम पे कहीं पे टीवी पे कहीं पे लगाऊंगा तो फिर कॉपीराइट इशू आ सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल यूज के लिए या लेक्चर्स के लिए कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, या सर मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ अभी, इस पे इशू नहीं है। अगर हम फॉर टीचिंग पर्पसेस के लिए इस तरह पे यूज कर रहे हैं, right, पब्लिशिंग के अंदर आएंगे कॉपीराइट। And what is your criteria while selecting a particular YouTube video among the many available? Is there any preconceived criteria that you have in your mind? Which one, I mean, yes, should be sir. utilized, which one should not be utilized? क्राइटेरिया ये होता है कि जिस तरह बहुत सारे खजाना है यूट्यूब, बहुत वीडियोस हैं उसके ऊपर, तो एक तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और टू द प्रिसाइज जो मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ उससे रिलेटेड होनी चाहिए कि क्लिक बेट्स ना हो। अक्सर क्लिक बेट्स होते हैं, चीज़ मिलती नहीं है हमें, तो वो व्यूज देख के हम लोग या उसकी लाइक्स देख के उससे आइडिया हो जाता है कि इस पे कितने लोग देख चुके हैं या फायदा हासिल कर चुके हैं। तो इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, इट शुड बी क्लियर विद वीडियो एंड ऑडियो, जो हमें कोई उसका फायदा मिले उस चीज़ का। ये चीज़ मैं देखता हूँ। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। और आपने एक पॉइंट और शायद मेंशन करना चाह रहे होंगे कि जब आप सिलेक्ट करते हैं वीडियोस तो उसकी अथॉरिटी, उसका जो कंटेंट है, उसके प्रोवाइडर जो बनाने वाले हैं, दे मस्ट बी आल्सो रिलायबल, because many people these days just have just jumped into that ocean. Yes, so वो reliability from their subscribers, from their views, this is the most important criteria. Comment section जो exactly, like कोई organization है, कोई health care organization है, कोई forum है, कोई professor है, कोई जिसकी expertise already है, well known, also that must have to be your first criteria also. So thank you very much, Salman. It was very informative. In a very short time you have done something well. So I had heard from Dr. Kurutulayan. I think she wanted to present now. So yes, sir, आप स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज। जी डॉक्टर सलमान, आप अपनी स्क्रीन शेयर अगर वो स्टॉप कर देंगे तो मैंने कर दिया सर। Right. So once we will have your content on screen, then your time will start. Okay, your time starts now. So the tool that I'm going to discuss today is Socrative.
I have found it as a very useful tool for enhancing student learning. So what is it? It is basically an online, it is basically an online question and answer system. It is basically a question and answer system which allows the teacher to digitally interact with the students. The idea is to take quizzes online, and it is very useful for remote learning and for paper-free classroom. The results obtained are available in Excel sheets as well, and immediate formative feedback can also be given to the students. So the teacher has to prepare MCQs, and she or he has to upload them, and the student has to join the Socrative classroom and then answer the question. So the advantages are that so although there are many quiz-based tools available, it is very specific. It helps you focus on questions, and it is very easy to use. Multiple choice questions and answers have instant feedback options as well. So if the student they can get an instant feedback if the teacher allows it. And this allows the teacher a margin. This gives the teacher an option to ensure that there is no cheating if the tool is being used for assessment. And the tool is also giving option to use images. The limitations are that the enhanced features for Socrative have to be purchased. It requires a working internet connection. All students need to have their own mobile, laptop, tablet, or internet tablet device, and they have to have a stable internet connection. And another disadvantage is that when the connection breaks, a student rejoin, it starts him or her as a new student. So if I critically reviewed the tool, I think that it is a good tool which helps the student to, if he or she wants to determine his or her grip on the subject by answering the questions which the teacher has added, and the student can use this tool at home or in classroom setting. And this also helps the teacher to assess the depth of the student learning and helps to assess their learning needs. However, it is mainly a teacher-driven assessment tool, and of great advantage, its student would be able to submit answers. So this is awesome. I'm done, sir. Right. Thank you very much, Dr. Kuratlan. जी. असल में वो वीडियो ऑन हुई है शायद सब लोगों की, और मेरी भी, और सबने अनम्यूट किया हुआ है. I will request again to just mute yourself, and only when we will be allowed to make critical appraisal, or if you want to make any comment or you want to put any query, then only you just unmute yourself, because there are some background noises coming. For me it is okay, but the one who is presenting sometimes it's like distracting a lot. So और ऐसे क्लास में बच्चे आगे बात कर रहे होते हैं, आप टीचिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा भी कोई सरगोशियां करता है तो इंसान पूरा डिस्ट्रैक्ट होता है. दूसरी बात, ये वीडियोस हमने सबने खोल ली है, तो बीच में आपका क्रिटिकल जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था ना, वो बहुत रुक गया, बहुत ब्रेकअप हुआ. So I will request everyone now to just close down the video so that we should have good bandwidth for the internet, and then later on we'll just whoever is presenting, he should or she should just keep his webcam on and the mic on. So, and I would request again, Dr. Kuratlan, please just once again quickly, yes, this particular slide which I was unable to hear at all actually. Yes, Dr. Kuratlan, please once again. सर पूरा प्रेजेंटेशन कह रहे हैं, आवाज कट गई थी. नहीं, ये क्रिटिकल रिव्यू वाली जो स्लाइड एक आपकी थी, क्रिटिकल रिव्यू. एग्जैक्टली, ये आपकी पूरा ब्रेकअप. जी. So we were talking about the Socrative, and if I critically review this technologically driven tool, I think it is a good tool, as it can be used by the student at home, not just even in class, and the student can him or herself assess their grip on the subject they have learned by solving the answer to the questions put up by the teacher. There are multiple choice questions and even images are used, so students can get immediate feedback on the app as well.
and the teacher has the record on the Socrative, and she or he can assess the depth of the student learning as well as assess their learning needs. But one thing is that it is a teacher-driven assessment tool mainly. So I think it would be better, it would be great if the students are able to submit their question to teacher as well through the same tool. Right. Thank you very much, Dr. Kurutran. Thank you, Sorry sir. for giving you trouble to just ask, No asked to problem, just sir. repeat the same slide again. No So problem. for my understanding, what I have learned from you now, that this is a very, very well-structured tool, and it really is helping students and teachers as well. And I think the most important part was its ability to give feedback, and students' learning abilities are there to be dealt well with the provision of feedback by the teachers. So they should know that which concept has not been clearly imprinted. Okay. Yes, And sir. can you tell us that as I just heard that it is paid software? So how much does it cost? Sir, And did it's you a check its certain price? features are enhanced features are to be purchased. Hello, sir. Okay, yes, I can see now. But otherwise, usually basically, basic features is free. With basic features, like you version is can free. add up to 100 MCQs, and they will not charge you for it, and up to 150 plus students, and they will not charge you for it. But after that, they will charge you for the for Okay. using the app. Gee. I got it. I got it. So any participants, any of our fellow want to make any comment, say some appreciation for the two words we just seen by Dr. Salman and Dr. Kurutran Kurutran? has made a very comprehensive and good presentation. In fact, I had also prepared on Socrative, but I guess Kurutran's review is more Kursia detailed. is my very good friend. हमारी ना वो match हो गई है, इसका मतलब है. ये टेलीफ्रीक्वेंसी चल रही थी आप लोगों की. Process. सर ऐसे ही है. नहीं, अगर आपने prepare किए तो you can just go on, because there are two different minds have done something, so it would be like, you know, more interesting to see that how two Right, different sir. people have perceived the same idea. Right, Or sir. it's up to you if you want to just have something different. It's up to you. Sir, okay. Can you enable screen sharing? Yes. is enabled. Once Dr. Kurutlan will stop, then you'll be able to start sharing your screen. I opted, sir. Sir, am I visible now? Yes, very clear. Okay, sir. And your time I'd starts like to now. share about, But I my would, presentation- before you start, yes, Dr. Kursia, please just Sir. wait for, hold on for a while. I would again request all participants to close their web cameras, to close their windows. But still, yes, okay, that's good now. So let Dr. Kursia start with her presentation. Sir, my Bismillah. presentation is on use of technology enhanced teaching and learning experience in higher education using a tool called Socrative. The term TEL as given assignment stands for technology enhanced teaching and learning, as we had already discussed in today's session. The tool that I'm going to describe is Socrative. It is an online tool for gamification in learning and teaching. How is gamification done? We can create online quizzes, we can add participants, and we can start space race mode with time limit. So with limit of time, who wins the race first is going to be winner, provided that they score the higher and give the maximum correct answers. The experience I have experienced to administer it on the first year medical students, boys versus girls space race was conducted, and they were very excited. Entire class seemed to participate very eagerly. And I think whenever the races are gender based, they tend to participate more actively and eagerly. So I also got their feedback at the end, and they agreed that they would like to continue this exercise in future. The advantages that I perceived regarding the use of this tool is that it enhances the interaction and learner engagement.
learner feedback is possible, and individual engagement is possible. If you enhance the number of participants, the people participating in games can be enhanced. Again, as Kuratulayan rightly mentioned, that to enable unlimited learners, we will have a paid subscription. Distant learning and administration is possible, and app also allows self-marking of quiz. Once you have created, you will choose the correct answer, and then it will automatically grade the students. The limitations are internet connectivity issues. For example, if everyone is going to use data, then the bandwidth issues arise. Similarly, the purchase subscription for full features is needed, and then everyone should be having a device to administer this tool. Thank you. Okay. Thank you very much, Dr. Kusia. Very informative and very well framed, well presented. The only thing, I think you are using your mobile for today's session, so that's why your screen was a bit small. Okay. So, as you said, that Socrative has been, like, in town now. So I hope anyone else would not have the same topic selected. So any similar app or resource similar? Sir, I am to also Socrative? prepared Socrative. Sorry, sir, for Okay, interrupting. Dr. Sarwar. They're same. No harm, no harm, no harm, no harm, no harm. Okay, sir. So similar Okay, software because is they- Sir, the- maybe I can take you to Socrative and we can have a tour there. अगर presentation से थोड़ा सा different करना है तो. Sure, but I think it would take like more than 5 minutes, then it won't be conclusive. So and different वो रखने में कोई हर्ज नहीं है, same रखने में कोई हर्ज नहीं है. Presentation skill also itself has got marks कि आप किस तरह से उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं. सबको वही टॉपिक दे दिया भी क्या हो, अगर सिमिलर टॉपिक भी हो तो your presentation skills do count. So okay, मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर कुसिया से कि आप सोक्रेटिव से सिमिलर कोई ऐसा है, कोई नाम अगर आप बताना चाहेंगे टूल जो यही सब चीजें जो है वो प्रोवाइड करता हो विद सेम फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. सर गूगल फॉर्म्स पे भी क्विज एडमिनिस्टर किया जा सकता है, लेकिन उसमें गेमिफिकेशन फीचर नहीं है. ठीक है, गुड. सो आई हैव मार्क्ड डॉक्टर कुसिया's name, Dr. Salman Rana and Dr. Kuratulayan. So who is going to present next? Now can I present? Dr. Pakiza. Is it Pakiza, Dr. Pakiza Shahid? Yes. And once we will have your content on screen, then आपका हम वक्त यहाँ पे काउंट करना शुरू करेंगे. So अगर डॉक्टर कुसिया अगर स्टॉप कर दे शेयर करना स्क्रीन, तो डॉक्टर पाकिजा would be able to start sharing her screen. Can I start sharing? Sure, go ahead. So share हो गई? जी हाँ, आप स्लाइड शेयर कर लें, स्लाइड शेयर पे क्लिक कर लें ताकि जी फुल से स्क्रीन आ मैंने जाए. कर दी। जी हाँ, it will take like 5 minutes, 5 seconds delay every time. So now can we start? Yes, Bismillah. So I have taken the Zoom very practiced our home. So it is a very good technology advanced learning online video tool form used for the last, it has been started in our colleges too during that COVID era. It was started back at the end of 2011 in the United States. So it is a very friendly and it allows the user to create and join the virtual meeting rooms for the communication, mostly for the official work meetings and our learning environment. The regulatory body is the instructor, facilitator of the class, and the benefiters are the students for learning. Some of the benefits include that the instructor or the host of the event, it controls the rules of the class by controlling who can enter and who can use their microphones. तो आप mute, unmute कर सकते हैं, you can join by video. तो it's a very friendly, जैसे अभी हम 2 to 3 hours का session कर रहे हैं जिसमें हम
we can unmute ourselves अगर हमने कोई engagement हो गई है for 5 minutes 10 minutes and just we can hear, we can join by the video, we can off that. It's very friendly. The main components में physical नहीं मुझे लगता cover होता है. The main components जो cover हो रहे हैं इसमें social और psychological cover हो रहे हैं. और इसमें जो बहुत अच्छा impact आ रहा है वो teachers and learner facilities है. इस वजह से ये undergrad में even schools में जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी Zoom पे Google Meet पे इट्स वेरी फ्रेंडली के छोटे छोटे 2 क्लास के बच्चे भी आजकल कोविड एरा के बाद भी यानी ऑनलाइन मीटिंग सब कुछ अपने टीचर्स के साथ उस पे कर रहे हैं. इट्स वेरी फ्रेंडली. सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर भी इसमें आ जाता है. आप थोड़ा सा अपने जो क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं इसके अंदर. इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में इमीडिएट फीडबैक कर सकते हैं. जैसे आपने अभी MCQs दिए उसमें आप एंगेजमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं अपनी क्लास के. और टूल्स इसमें हैंड रेजिंग जेस्चर, इसमें थोड़ा सा आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं. इसके अंदर इस तरह के टूल्स बने हुए हैं कि आप डिसेंट क्लास उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, साइलेंस को. और लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब में चैलेंजेस हैं जितने भी ऑनलाइन तकरीबन उसमें बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी चैलेंज है जिसमें डेटा लीकेज है, शॉर्ट कमिंग्स है. लेकिन ये ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं ये ऑनलाइन जितनी भी हैं वर्चुअल उनके अंदर ये थोड़े चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. तो सब बस मैंने तो राइट. सो आर यू डन नाउ? जी सर. कंप्लीट हो गई आपकी डॉक्टर जी. पाकीज़ा? अच्छा जी, डॉक्टर जी. पाकीज़ा, आपने अभी कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. क्या आपके दिमाग में आता है इससे? क्या कि Zoom एक्चुअली यू नो always being showing its pride in telling his audience about the confidentiality and the secrecy and the security. So हरल उसमें जरूर होंगे जो आप मेंशन कोई करना चाहेंगी, कोई इस तरह के इश्यूज सर जो ब्रीच हो रिकॉर्डिंग सकते हैं? यानी कि इसके अंदर आप बहुत प्राइवेट चीजें जो है जैसे ठीक है टीचिंग फॉर्म्स पे तो ठीक है लेकिन जितने भी ऑनलाइन है इसमें शेयरिंग बहुत ज्यादा होती है. तो बहुत जो प्राइवेट आपकी जो चीजें हैं जैसे अब हमारी टीचिंग एंड लर्निंग जो हम मेडिकल स्कूल्स में कर रहे हैं इट्स नॉट प्राइवेट. लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन है इसमें अगर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट चीजें विच यू डोंट वांट टू शेयर इसमें थोड़ा सा उसका लीकेज का एलिमेंट ज्यादा होता है जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं. हम उस डोमेन में नहीं आते हैं लेकिन जो हाँ मीटिंग्स के अंदर आपने बहुत ज्यादा चीजों को कॉन्फिडेंशियल और लीकेज का आपको प्रॉब्लम होता है वो इसके अंदर आ जाता है. हम उस डोमेन में नहीं आते हैं. अच्छा ठीक, आई गॉट योर पॉइंट. अच्छा आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है इसमें, इंटरेस्टिंग ना. आई रियली लाइक योर प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह, वेरी कंसाइज, वेरी कोहेरेंट. द मेन कंपोनेंट्स आर सोशल एंड साइकोलॉजिकल. थोड़ा सा एक दो पॉइंट अगर हमारे तमाम ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट जैसे इसमें किस तरह आपने से. जी जी सर आपने जैसे स्लाइड शेयर की थी उसको थोड़ा सा रख के कि आप इन कंपोनेंट्स को कवर करें. उसमें आपने लिखा था सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल है कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स टू. तो फिजिकल तो मुझे इसमें इतना नहीं लग रहा था. साइकोलॉजिकल इसमें मूड्स आपके जो अब आप जैसे हमारे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आप एटीट्यूड्स यू कैन असेस इन दैट मीटिंग. और सोशल में भी है कि आप शेयरिंग कर रहे हैं. तो मुझे लगा था ये 2 एलिमेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, फिजिकल नहीं हो रहा है. तो ये मैंने थोड़ा सा वो एलिमेंट्स देख के इसमें किया था कि फिजिकल मुझे लगा था नहीं हो रहा है. Right. Can you just go back to the third slide, the last slide that you had just presented? Yeah. अच्छा इसमें थोड़ा सा ना आपने वो बड़ी हेडिंग दे दी ना, चैलेंजेस ऑफ Zoom. तो लगता है कि वो सारे नीचे जो कंटेंट होगा नहीं वो सर वो would be छोटे talking about challenges. बेनिफिट्स हाँ, के बाद ये चैलेंजेस exactly. आते हैं. बिल्कुल Right. ठीक है. That's fine. This just for you to जी repair it later. So we really enjoyed listening to you, Dr. Pakiza. And if you could just stop sharing your slides so that we can just sir. be having our next participant. And who is going to present next? Dr. Lare. Dr. Lare. Yes, please go ahead. प्रेजेंटेशन है आपकी, आपने पावर पॉइंट पे बनाई. अच्छा माशाल्लाह, लग रहा है काफी लोगों ने बनाई. अच्छा, वेरी गुड. Really inspired. Okay, I can see 3 slides. So once you will start, okay, now your time starts now. Bismillah. So my presentation is on Google Classroom. Basically, Google Classroom is a free blended learning platform developed for simple creating and distributing and grading assignments.
Its primary purpose is to streamline the process of sharing files between teachers and students. As internet says, from 2021, approximately 150 million users uses Google Classroom. Criticism was done on it that it don't have privacy from students. And next, I added Google Classroom, जो कि मैंने खुद बनाई थी अपने students के लिए, डेंटल मटेरियल्स के नाम से, और एज अ स्टूडेंट जो मैंने अटेंड की अपनी मास्टर्स की भी ड्यूरिंग 2 years उसका भी साथ में है। इसका फायदा ये है कि असाइनमेंट आप इजीली अपनी अपलोड कर सकते हो, ठीक है, टीचर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, फ्लिप क्लासरूम को भी जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और इससे ये बेसिकली मेरी ही क्लासरूम की पिक्चर है, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के साथ जो है उन्हें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके साथ जो है डिस्कशन जो है वो कमेंट्स के अंदर चल रही है, और इसे इस तरह की काफी सारी एक्टिविटीज इसमें हो सकती हैं। Nice, good. Thank you, sir. You are very reflective because you have just shown your own real life examples in a very short time. Thank you, sir. Thank you, sir. So excellent, excellent presentation. So I'm happy that you people have been through your masters while being in touch with TEL and all these technologies and our tools. So mashallah. So that today's topic was actually not a new one for you. So this also gives me encouragement that okay, whatever terminology being dealt today in today's session must have not been just, giving you impression that as if I was talking French or Chinese. So once again, Dr. Larip Kamar, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for very concise and but explicit presentation. Let's move on to our next participant, and we are running time also. Who is going to present now? Dr. Aksa, is it you? Yes, yes, sir. Okay, please go on. Okay, just You also have got a PowerPoint? yes, sir. Wow, great. One second, sir. Able to see your screen, then we'll start your time. Still you are Just a working second, on sir. it. Yep. Take your time. No hurries. Take your time. Actually, Azan bhi ho rahi hai. Share screen. Down there, there's a green illuminating button. Yes, you are there. Okay. Now we can see your screen, and once it will be loaded, then we will start counting your time. So, okay. So my topic or my software that I chose is actually Canva. You already talked about it a little as well. Canva is actually a graphic tool, just like Adobe Premiere Pro or other Adobe softwares like Adobe Photoshop. What is unique about Canva is that it is accessible. It is easy for use. There's ease of use for students as well as teachers. There's ease of use for all working ages, whether young or old. It's perceivable, it's easily operatable, it is understandable, and it is robust. So it is friendly for all ages as well. So it has graphics that are it creates graphics that are used to express your own thoughts and struggles, which helps you develop something that is in your mind's eye and bring it to be able to visualized by the world or other people. It is actually replaced by techie softwares like Adobe, and it has made the lives of many people quite easy because Adobe Photoshop were something people who had a degree or who were tech savvy that they could use it much more easily. And even then it was quite cumbersome as well as time taking. It is device friendly. You can use it on phone, on laptop, on tablet, or any device. It is actually struggle free.
and user friendly, because you can bring about a lot of components, including video, pictures, PNGs, PDFs, and then you can download them into any sort of required format, which can be PDF, PNG, JPEG, JPG, anything that you are requiring. So it is quite struggle free and user friendly. It is free. It has two aspects, free and paid. It doesn't limit users' creativity because it gives enough options on both versions. And when it upgrades you, it gives you a lot more options. But even then, without having a paid version, you are able to create a lot of basic and required posters, graphics, videos, presentations, and everything. Lastly, payback time. There are people who in this world right now, especially after the COVID pandemic, who have started working freelancing, who have started making graphics and stuff. So even if you pay for a paid version of Canva, you can get paid back, because if you do something like that and you start earning from it, it pays you back. And I think that's it from my side. Thank you. Thank you very much, Dr. Aksa, for enlightening us about Canva. And really, the one point I really missed while explaining about Canva is it gives you option for the payback. Oh, that, and that's very interesting. And that's like, you know, very, very, what do you say, that makes it in demand. And especially when the Adobe is there, and as you just mentioned, that Adobe is for, if I have not heard you wrong, that you said that Adobe usually is very, what do you call this, is for the people who are tech savvy and who are more adept. So, but what I have the feeling that, you know, Adobe has been in market for so many years, and Canva is our next generation arrival. So still you think that the Adobe requires you to be tech savvy while using it? Actually, there are many other differences. There are many positive points to compare Canva over Adobe. Yeah. But still, do you agree that you have to be very expert and tech savvy if you are using Adobe? And if Maybe you are my using Canva, you don't definition have to of be. tech savvy is actually for old people and not for modern people. So if I change the Okay. definition, then it makes sense that, I yeah, agree. because Now I agree. older people are better able to use, who have degrees or who are actually working more into technology. Today, if we call the modern technology I agree. easier, that is then not tech savvy. You have made your point very clear now. Thank you so much, sir. Okay, excellent presentation. Excellent presentation. Very, very short time. You will have done a great job. So let's move on to our next participant who is going to present. I think I can see a hand raised by Dr. Dr. Rehana. Rehana. जी जी please. आप एक्चुअली screen share आई है कीजिए. मेड मैंने वर्बल बनाई है और मैंने अपनी ठीक है. रूटीन पे बनाई है जो मैं रूटीन में अप्लाई करती हूँ अपने लेक्चर्स में. ठीक है जी. फॉर टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस आई यूज पीडीएफ फाइल्स as I belong to Gynae and Ops department, and during my lecture I use the RCOG Green Top guidelines that are actually already made PDF files जो कि research based हैं, evidence based files हैं, जो कि systemic reviews और meta analysis के बाद patient पे applicable जो भी knowledge है उस पे बनाई गई हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक at the same level use की जाती हैं for the teaching purpose as well as for application on the patient as well. तो मैं इसको अपनी लेक्चरिंग टेक्निक में यूज करती हूँ. लेक्चर के दौरान मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जिस भी टॉपिक पे लेक्चर है वो अपने मोबाइल पे आरसीओजी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस खोल लें. ये स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग भी प्रोवाइड करती हैं, पीयर लर्निंग भी प्रोवाइड करती हैं, और आपके लेक्चर से चले जाने के बाद एक सोर्स ऑफ टीचिंग जो कि बहुत ही रिलायबल है और रिसर्च बेस्ड है, जिसमें एविडेंस लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसका एक एविडेंस लेवल स्टूडेंट को अवेलेबल है और फ्रीली डाउनलोड है, एप्लीकेबल है और नियरली ऑन ऑल टॉपिक्स है जो भी आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आप अपडेटेड हैं, जो कि ग्रेजुअली अपडेटेड होती रहती हैं. अगर जो भी उस टॉपिक के अगेंस्ट जो रिसर्च आ रही है उसके मुताबिक अपग्रेड होंगी और बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स है. ठीक, तो इस सोर्स का बेनिफिट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होता है. एट द सेम टाइम हर एक अपने सेल फोन पे इनको खोल लेता है और उस अदर देन किसी और टॉपिक पे बाद में जब उन्होंने पढ़ना है वो इसी फ्री पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं. इसी पीडीएफ फाइल का आगे एक ई लर्निंग प्रोग्राम भी है जो कि पेड होता है, इसलिए स्टूडेंट्स एक रिलायबल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम में एंटर हो जाता है
जिसमें वो आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी आपकी फिजिबिलिटी रहती है कि आप उन्हीं गाइडलाइंस को एक्सप्लोर करके उनको पढ़ाते हो, उन्हीं उसी रिलायबल सोर्स से, और चीजें एक्चुअली उस तरह फिर पढ़ाया जाता है कि जी वो आप आउट ऑफ टेक्स्ट ना जाओ, कोई भी ऐसी बात टीचिंग या लर्निंग में ना आए जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, जो बाद में क्वेश्चनेबल हो। और एट द सेम टाइम इनके एंड पे, इन्हीं गाइडलाइंस के एंड पे क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली बाय द पेशेंट्स, कि क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि मरीज आपसे कौन से कॉमनेस्ट क्वेश्चंस करेगा, जो कि उसकी जब आप यही स्टूडेंट्स लेक्चर से उठ के वार्ड्स में जाते हैं तो कॉमनली आस्क क्वेश्चंस और एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो एक्चुअली ये गाइडलाइंस कॉमनली और साथ उसमें पब्लिक अवेयरनेस सिनेरियोज भी शामिल किए गए हैं कि पब्लिक, अगर आपने किसी पेशेंट को काउंसल करना है तो पब्लिक अवेयरनेस लैंग्वेज क्या है और आपने किस तरह काउंसल करना है। इन्हीं गाइडलाइंस के एंड पे काउंसलिंग सेशन भी है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बाद में जब वो इंटरेक्शन कर और जब आप उनको असेसमेंट और फीडबैक में आप इन्हीं पे बेस्ड जो है वो असेसमेंट करते हो स्टूडेंट्स की, कि इन्हीं पे बेस्ड असेसमेंट की जाएगी और इन्हीं पे बेस्ड डिस्कशन की जाएगी लेटर ऑन असेसमेंट क्वेश्चंस। बस ओके सर। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेहाना आमिर फॉर एनलाइटनिंग अस रिगार्डिंग something that is really well backed by Royal College of Obstetrics and Gynecology. I hope क्योंकि जिस तरह नाइस गाइडलाइन वालों ने भी अपने कुछ प्रोग्राम बनाए हुए, पीडीएफ में वो कंटेंट देते हैं और बीएमजे वाले दे रहे, तो ये बहुत रिलायबल है, नो डाउट। और अच्छा, एक चीज मैं शुरू में समझना चाहूंगा और हमारे ऑडियंस भी समझ पाए कि ये एक ऐप है जिसमें आप अपना टॉपिक सर्च में डालते हैं, उस टॉपिक से मुतालिक कंटेंट आपके पास आ जाता है। हाँ जी, सारा फिर कंटेंट आ आप जाता है। उसको पीडीएफ में आता है, फिर आप उसमें से चाहे तो एज इट इज अपना लेक्चर कंटेंट बना लें या उसकी लेक्चर पावर कंटेंट नहीं, पॉइंट बना लेक्चर लें। के दौरान नहीं, लेक्चर कंटेंट नहीं बनाना उसको। एक्चुअली लेक्चर के दौरान स्टूडेंट खुद खोले उन गाइडलाइंस को, ताकि जब वो पढ़ते हैं तो वो यूज टू हो खोलने के लिए एक रिलायबल सोर्स को, बजाय इसके कि वो एक किसी की भी लिखी हुई टेक्स्ट बुक जिसके साथ एविडेंस लेवल नहीं है उसको खोले। लेक्चर के दौरान उनके सेल्फ उन्हें मैं कहती हूँ खोले, ताकि वो राइट उनको आदत हो कि एक राइट रिलायबल सोर्स के थ्रू पढ़ने की। राइट। तो आप जो लेक्चर ले रही होती हैं उससे ही रिलेटेड अगर उसमें वो उस पर खिलवाती सर्च हूँ, पे हाँ जी, डाल लेंगे। रिसर्च पे डाल देती हूँ, हाँ, अपनी अब भी उससे समझ भी में आ गई लिंक बात। और उनके पे भी खोलती हूँ। हाँ जी, सर मैं वो जो एविडेंस लेवल भी चल रहा है, तो साथ में अगर इफ यू वांट टू टेक दैट कंटेंट एंड लेटर ऑन मे बी यूटिलाइज इट फॉर योर लेक्चर्स आल्सो, बिकॉज़ मैं हाँ अभी आई एम स्टिल कंसर्न व्हाई नॉट टू यूज दैट गाइडलाइंस इन योर लेक्चर पावरपॉइंट स्लाइड्स एज अ रेफरेंस एक्चुअली। लेक्चर पावर पॉइंट स्लाइड्स में भी आप उनको कंप्रीहेंसिव करके यूज करते हो, जिसमें नीचे सोर्स लिखा होता है। लेकिन मैं उनको लेक्चर पावर पॉइंट में इसलिए ज्यादातर यूज नहीं करती कि अदरवाइज स्टूडेंट लेक्चर के एडिक्टेड है। वो जो सोर्स होता है एक्चुअली स्टूडेंट आई उस गॉट वक्त यूज करते, जब उसने कोई टॉपिक पढ़ना और उसको कोई सोर्स ठीक है रिलायबल नहीं मिला, तो एक रिलायबल ठीक है सोर्स जी, की उनको आदत हो जाती है, ताकि वो एक स्टैंडर्डाइजेशन लर्निंग हो प्रोसेस कि सबके लिए गॉट इक्वल योर हो ना। पॉइंट। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो गई, बिल्कुल। आई गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेहाना। डॉक्टर रेहाना Amir was presenting her work which she has done as a verbal presentation. Fine. So now we can see two hands raised from Dr. Khadija and Dr. Saria. So who is going to present now? It's up to you. Sir, if it's okay with Sarah, can I go first? Yes, you can go. Thank you, Jazakallah, Sarah. Okay, so my presentation is also on Socrative, sir. But my fellow colleague also gave a very nice briefing about it, but I'll add a few points to it, and maybe we can go through the Socrative site itself as well. I'll start sharing my screen. Okay. Right. So I hope all of you can see it. So Yes, we can see. Socrative was first introduced or launched in around 2010. Is my screen still visible? Okay. Yes, we can see it. Okay, so it's a very good formative assessment tool, and I have been using it since I started my teaching career as a demonstrator in Department of Community Dentistry. So, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल COVID times थे,
So इससे we were introduced to this. So एक दफा हमने उधर बनाया again for the formative assessment of our students. हम इसको different formats के लिए use कर रहे थे. Even हम class assignments भी दे देते थे इस पे Socrative पे, and quizzes, class quizzes दे देते थे. And because इसके अंदर option quizzes की भी होती है, multiple choice question भी होते हैं, there's short answer की भी option है और true and false की भी option है इसमें. वो I'll take you through the tour and then we'll have a look at it. But the thing is that quizzes need to be created in advance. So ये Dr. Kuratlan ने भी इस पे discussion की थी. So it's a very good way of tracking progress of your students. Why? Because it gives a very nice Excel generated sheet as well at the end, and it gives you even the percentages of answers that are correct. For example, if there is a certain question that is answered by all the students, but uski answer percentage itni high nahi hai, so it gives you an outlook that maybe you need to go for a post-hoc analysis of that test, और उसमें से कोई questions ऐसे हैं जो बहुत highly answered by student हैं, correctly answered, so maybe we can go about it and see कि इसमें कुछ changes तो नहीं हमें करने की ज़रूरत. So एक brief outlook आ जाता है, उसके बाद फिर आप further detailing में भी जा सकते हैं. It's a good way of giving feedback to your students as well, so उनको पता चले कि अगर आपने for example quizzes blocks में बनाए हैं, so maybe you can identify कि कौन सा एक certain portion है जो students would need to work on, because the individualized results भी देता है. And you can definitely check the progress, and बेसिकली जो फ्री चीजें हैं उसमें सारी बेसिक चीजें हैं. अगर आपको कोई एडेड फीचर डालना है उसके लिए आपको इसको पे करना पड़ता है. लैंग्वेजेस और लर्नर एज आप जिस तरह क्वेश्चन पुट अप करते हैं उस तरह के यू कैन इजीली पुट अप ऑन सॉकेटिव. अगेन ये इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस हुए थे कि एज सच कोई स्टूडेंट साइन अप नहीं होता, आप उनको लिंक दे देते हैं, दे जॉइन द लिंक एंड दे आर रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट्स देयर, और एक डाउनलोडेबल डेटा की भी ऑप्शन आपको देता है, अगेन एक्सेल शीट दैट यू कैन इजीली यूज एंड शेयर एज वेल. एंड बस एक ये है कि you need definitely you need to pay if you need better features. Now we'll quickly go to this site and see how it looks like. So I hope you can see this Socrative screen as well. So either different Yes, we option can hai. Thank you sir. You can go for quizzes as well. आपके पास multiple choice, true false, short answer की भी option है. For example, अगर मैं कोई quiz launch करना चाहती हूँ, these are the already made quizzes that I've made. एक कम्युनिटी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है. कुछ अभी रिसेंटली हम सर्टिफिकेट एंड हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स करा रहे हैं CMH के अंदर. उसके लिए भी वी यूज दिस 50 MCQ के एक टेस्ट था एंड समेटिव एग्जाम था फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स. वो भी हमने सॉकेटिव पे ही लिया था. बट अगेन आई टेल यू समथिंग कि इफ यू आर एंडिंग अप लॉन्चिंग दिस क्विज, तो कुछ फीचर्स तो आपको फ्री मिल जाएंगे, जैसे shuffling questions, shuffling answer. These are all to limit the aspect of cheating. So ये सारी चीजें options आपको मिल नहीं जाती हैं. Question feedback भी मिल जाता है, free में final score भी पता चल जाता है. But ये जो one attempt वाला option है, you need to pay for this. It means कि you can only attempt your question once and you cannot go back to your questions then. So again, अगर you have to really go for a nice proctoring measure, so you really need to try कि ये आप इसका paid version भी आपके पास हो. And if I have a minute or so maybe we can also look at the fact we have 40 seconds remaining. Okay, so basically reports और results भी आपके पास इधर आ जाती हैं downloadable forms में. यहाँ right side पे you can download the reports as well. और जब भी आपने कोई नया quiz create करना है या तो you can easily go to the quiz option and create a new quiz as well, or even launch one. So I hope I was able to. And you can add, there are options for adding quiz as well. My Zoom screen is currently disturbing it, but so yeah, you can select if you want to go for adding multiple choice questions. These are the questions, these are options, and you can keep making your quiz and it will be auto saved here and you can exit also. Your time ends now. Yes, sir, I'm done. We are really enjoying this real life experience of how to utilize all these options, even with the free version. And yeah, definitely, I think $59 per annum is not a very
big amount with this, extensive provision of all the features. And the good thing about it has got feedback session, and it has got features for your, psychometric kind of analysis at the Yes. end of your session that you, at the last slide you've shown. So I have to ask you, Dr. Aksa, that you said that it's for formative assessment. Is it exclusively for formative assessment, no. or like No, you are no, using it it for is- formative assessment? It is for summative also. As I told at the end that basically we also use it for one of our final exams for this certificate in health professional education course at CMH. So we give a 50 MCQ based quiz, and it's timed and it's proctored. So although उसमें different factors हैं कि it is an open book exam in any case, so हमें उसकी इतनी strictness का वो नहीं होता, but we still consider it as a summative exam. Right. So excellent presentation with all these details, with your real life experiences showing us how does it actually look like with this interface. And I think it looked very user friendly as well. So I think many of our other participants would also be encouraged with your short presentation to later on just go and take a deep look into it. So now I think Dr. Saria would like to present. Yes, sir. Yes, please go ahead. Is my screen visible? Yes, it is. Okay. You have to turn slide share. ओके जैसे डॉक्टर खदीजा ने अभी सोक्रेटिव के बारे में बात की है, ये सिमिलर है सोक्रेटिव से, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं. Kahoot है क्या? It is a quiz platform that is ideal for students and teachers. It is a game-based platform that allows you to create new quizzes from scratch. It's possible to be creative and offer learning options for the students. Kahoot is a tool that motivates and activates student learning because it can test their knowledge, reiterate important concepts, and help them retain information. It also provides instructors with the ability to further create class discussion and student interaction. It was founded in 2012 by Morton Johan and Jamie Brooker. Now, what is the difference between Kahoot and Socrative? Kahoot जो है ना वो it is just like a game. हम जब एक Kahoot लॉन्च करते हैं तो उसमें एक गेम पिन जनरेट होती है, हम वो गेम पिन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं और वो ज्वाइन करते हैं उस गेम को. और इसमें ये होता है कि इमीडिएटली रिजल्ट्स पता चल जाते हैं. हम इसको प्रेफरेबली यूज करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि जो हमने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, उनको समझ भी आया है कि नहीं, या वो अटेंटिव थे या नहीं. लेकिन गेमिफाई करने से ये होता है कि स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है वो ज्यादा हम ग्रास्प कर लेते हैं एज कम्पेयर टू हम उनको अगर ऐसे पिन पॉइंट करके क्वेश्चन करें तो वो गेम्स के थ्रू आंसर करते हैं. और इसमें एक और फीचर ये है कि इसमें ये भी आता है कि टाइम आता है कि किसने कितनी देर में जल्दी रिस्पॉन्ड किया, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है स्टूडेंट्स को. तो Kahoot इस जो है वो टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग में इस तरह से कि मोटिवेशन इंक्रीज कर देता है स्टूडेंट्स की. थैंक यू. Thank you, Dr. Saria. And it was like, very brilliantly presented, especially the component that you have just shown for comparing of two tool that once been spoken a lot today. Socrative, Sukrat साहब बहुत खुश होंगे कि बुकरात पे भी कुछ बन गया है, तो वो भी फिर present करेंगे हम next time. So, or the point that you mentioned that it has got added advantage over Socrative for motivating students, and that I really like your point. So let's see that who is going to present next. We are running short of time. We have to just end our session soon, so that your next 1 hour break shouldn't be spoiled. कौन है जी हमारे participant? I think maybe 8 participants so far, or 9 has presented, so I can see the number was like 14. So I'll present Socrative as well. Sir, I'll just quickly go through it as my fellow colleagues have already explained it very well. Right.
Right. Okay, Dr. Sarwat. Yes, please carry on. Okay, so Socrative is a quiz-based formative assessment tool. It is an interactive web-based student response system. Its initial prototype for Socrative was developed in 2010. And sir, as regarding the price, it has a free version, and it is also available for K-12, which costs about $59 per year, and it goes higher for up to $100 per year. And sir, its features has got reviews or grading in terms of stars. Like for ease of use, it has got 4 stars. For privacy, it has got 2 stars. For accessibility, it has got 2 stars. And sir, its free version is available for a class of 50 students. The class size should be 50 students. So it has got many advantages, like it engaging students to be responsive through game quizzes and fun activities. The learner feedback is possible in it, and distant learning is also possible in it. Sir, limitations are that it requires internet connectivity, and it requires device availability also. So, sir, I think it's enough because it is already explained very well by others. Thank you. No, you also have done well because you have just pointed out some basic features, and we were like Thank you, kind sir. of having a sense of revisiting what we have just heard earlier from your other colleagues and other fellows regarding Thank the price. We already knew it, and regarding class size that you mentioned, and really it was nice hearing from you and Dr. Sarwat. Thank you. Thank you very much for your brief and very on the topic, on the point presentation. And next, whom we can welcome? Is there someone else remaining who can, if I can request moderator? Himayatullah, Dr. Himayatullah, yes, please. Yes, sir. I was trying to prepare a PowerPoint previously, but couldn't have proper time for that. So I will just go through it. I was going to talk about Medscape. Okay, Medscape, right. So, yes, sir, Medscape, because I'm an internist, so I'm more interested in these kind of okay, yeah, definitely. apps and websites. Go ahead, it was basically started in 1995 by Peter Frishoff as a website for clinicians and a clinical reference. It has almost all fields related to medicine, including medical education, and it also provides CME in almost all fields, starting from internal medicine and gastroenterology and every field. But the interesting thing about this website, Medscape, is its application, mobile app, which was released in 2009. And it's quite interesting and very helpful for clinicians in all sort of clinicians, medical students up to higher levels. Another thing in this app is that it contains many other extra things, like apart from its reference, it contains drugs details, dosages and other things. It also has a feature of procedures in which different medical and surgical procedures are discussed. There are also some calculators for different scores like Wells score or BMI calculators and different things, which it itself, if you put values in it, it will calculate it for you. There are some drawbacks of this as well, because some senior doctors also criticize that it provides incomplete information, and also there is it contains the depth of knowledge it gives is lacking in many aspects. So these are some points that Dr. are criticizing about Medscape. So that's all. Right.
Thank you very much, Dr. Himayatullah. Thank you very much. Thank you. For all Thank these points, and you have just covered it very well within the time. And as you said that this has been used by the students, and you are yourself in turn, and you are getting benefit out of it at many stages, with many benefits that you have just spoken. Can you just tell me that which benefit you think is the one best benefit that has attracted you towards this particular tool to utilize in your life? So basically, it is a hand-on, reference whenever you are in a ward and you need to look for something, some disease or some medicine and its uses and its adverse effects. So you will just go to it and just with a flash of light, you can get all the information regarding that disease or that medicine or that drug. So it's it's a very useful thing for a clinician who is working and is busy in the clinics or in hospitals. Right. Once again, thank you so much, Dr. Himayatullah. Thank you, sir. For giving us some brief account of something that you personally are using also. So you are more reflective, you are able to be more reflective towards it. And thank you so much once again. So let's move on to our next participant, if someone is still remaining. Assalamu alaikum, sir. Sir, can I present? Yes, sure. I think this is Dr. Shaheen speaking, right? Yes, sir. Yes, sir. Can I present? Sure. Are you going to present your PowerPoint, or you are having Yes, some sir. verbal Sir, presentation? I made very small PowerPoint presentation. We required from you very small, tiny PowerPoint. You don't need any. Sir, I'll speak for 2 seconds only. That's fine. Let's sir. see what you have. Let's put it on the main screen. If you can just share. Sir, I can. Yeah, we can see it now. Sir, can you see? Sir, I'm sorry. Yes. I'm also going to present on YouTube. Ever since technology is accelerated, transforming how things are done in medical, business, education, government, and other fields, there are many apps to consult. I usually use YouTube as a way to learning due to the quick access to the YouTube. As my colleague told that it started in 2005. So it's a we can have new learning skills from it, and the learner have the access to demonstrate and digital illustration whenever it is needed, and you can learn it from any suitable time, and flexibility in learning routes are there. Sir, better search results are there, and it is free of cost serving. You can connect to a wide audience, and remote access is also possible. It gives us improved critical thinking and talent expression. And the disadvantages of my chosen YouTube is that there is a huge amount of content to compete with. I mean, अगर आप एक खोलते हैं एक साइट खोलते हैं तो उससे आपको एक तरह की लर्निंग मिलती है, लेकिन अगर आप दूसरी साइट खोलते हैं तो उसमें दूसरी तरह की वो एक प्रेजेंटेशन बताते हैं जिससे डिफरेंट व्यू मिलता है, मतलब डिफरेंट व्यूज आर देयर फॉर वन टॉपिक ओनली. Sir, sorry, my presentation is visible? Yes, we can see it. We can see in the free time you are playing Galaxy Attack game as well. I'm so sorry, sir. वो पीछे से Carry on, please. Limited video length है. It's like only 15 minutes की आप एक learning video देख सकते हैं. More possibly internet access. अगर आपके पास internet नहीं है तो फिर ज़ाहिर है YouTube की access इतनी possible नहीं है. Sorry, sir. It's a quick.
presentation. Oh, it was a brilliant one. We have just grasped all the idea. Once again, it was a revisiting for all that what we already heard from your other colleagues. And okay, well, question arises, Dr. Shaheen, abhi हमारा scenario gets changing every time, every day. Sir. Even due to political influence or international, happenings out there. So ऐसा Sir. होता है कि YouTube been blocked. So then what would Sir. be your replacement for it? Like आपके पास कोई इसका मुतबादिल तो आपके दिमाग में होगा क्योंकि you are like if you are just having it as your main Sir. source of internet learning, then you might Sir. have something standby. So then I'll What it move would be? on to guidelines, my evidence-based learning. Already my colleague Okay. told, I'll move on to Right. Green Top guidelines, NICE guidelines, Right. all the guidelines Yeah. which are authentic and evidence-based. Yes, and even those British NICE guidelines, they have just done a lot in terms of their projection through audiovisual recordings on the YouTube, and Sir. I hope you must be aware of that. So, and also whenever you are using YouTube, for every audience, for everyone, that just a reminder that you should know that the content being projected there is by someone who is having authority over the subject. So that only one thing has to be remembered. And once again, Dr. Shine, thank you so much for your very good presentation. Very nice presentation within the allocated time. And we are, I think, 5 minutes already late because we have to finish our session at this time. But I think if there are still more remaining participants, we will carry on with those before we end our today's session. Is there anyone else remaining who has not presented his or Sir, her So one of work? my friends in Attack is having internet connectivity issues. Dr. Sadia Ghaffar, she was unable to present. Okay, if you can just note it down so that it would be recorded that she had this trouble. Yes, that she informed. made her. So I have noted it with myself as well. She could not. और डॉक्टर खिजर को भी इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं तो ही इज अनेबल टू प्रेजेंट एज वेल. अच्छा, उनके लिए हम ऐसे करें, जो रह गए हैं 2 या 3 हमारे कंटेंट प्रेजेंट करने से रह गए अगर, तो if you could later on provide them your email so that at least whatever presentation they have made, whatever, और अगर उनको पता है, उनको आता है कि जिस तरह स्क्रीन शेयर करते हुए ना रिकॉर्ड का ऑप्शन भी होता है, पावर पॉइंट पे ही आप अपनी जो कंटेंट होता है उसको प्रेजेंट करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. अगर वो रिकॉर्ड करके भेजना चाहे ऑडियो विजुअल के साथ, ठीक है, वरना एटलीस्ट विजुअल फॉर्मेट में 3 स्लाइड्स हैं, 4 हैं, या पीडीएफ वर्ड जो भी है, या सिर्फ अपना वॉइस नोट ही अगर भेजना चाहें तो आप प्लीज उनको एनकरेज कीजिएगा ताकि दे शुड नॉट बी लाइक felt, they should not be feeling too left behind. So I think then, is there anyone else remaining, or we have done with all participants? I think कर्नल नदीम रहते हैं हम में से, वो भी हमारे साथ कॉल में हैं. जी, Right. I'm here. I can just verbally narrate a few things about Sure. YouTube, if you allow me, sir. I'm Dr. Nadeem. Go ahead, sir. Yarfan. Go ahead. I'm not directly concerned with the undergraduate training, but the postgraduate training. So much has been said about Socrates and Zooms and all that. But I, in my capacity, use this YouTube for my references. I generally talk about communication skills, time management, stress management with the postgraduate students. So to me, it's more beneficial, more comprehensive. We can get the relevance, we can get the, in fact, even the data which we required at some time. For example, if we talk of amputation being done around the world in, say, 1 minute, as far as this myostoma foot or diabetic foot is concerned. So that is also available. So whatever is the reference, rather than spending more time, it is very easy for me. And one thing I like in YouTube is that you can download that clip or something which you require, and you can see it offline as well. This is, I mean, when I go to Sheikh Khalifa hospital, like Rahim Yar Khan, like other small cities, to me, it's a great help.
So I think I go. And important thing is that I'm computer shy with all my limitations at computer. So, but I still use this relevance in computer through this YouTube. So far my favorite, because I can get. Thank you very much, sir. That's all I wanted to share with you. I'm really honored, sir, by your presence. Thank you, by Dr. your, wonderful lectures in this high tech. And this high tech, today we have learned much. But one question, if you allow me, are we producing the excellent doctors, all those strategies and all those tools and artificial intelligence is concerned? Are they, more productive or the previous? Because in England, they're still, they have started the previous orthodox method of learning as well, parallel to this. So this is something new for us. Thank you, sir. That's all. You are right. I think to respond to this query or session or comment, I think you yourself in a better position, because you are dealing with the postgraduate. And at the right at the moment, actually, I'm dealing with assessment of undergraduate as well at my university in here. And we have, high-tech digital support at our university in here. And we have mannequins there. They cost a lot, but I mean, if a country, if an organization can have this. But in my own personal experience, whenever I go to any clinical skill class, I do have mannequin with me. I demonstrate them, because these mannequins are like, so high-tech that what usually it takes me even to learn how to operate this mannequin first before starting training my juniors and my students. And that got simulation, they have programmed, and they have computers attached with it. They have got, like, even if you put syringe for cannula administration or for auscultation, so it gives you an impression also that which site is the correct one and which site is not. And with all this voice simulation is there, and patient even cries and with out of pain and these things. But even after finishing with my mannequin presentation, with my training using mannequins, I always asked one of the volunteers to be there among the class, and I let students have the real life touch. It was very important, because what I have seen that initially we were just teaching our students with all these mannequins and machines, and once they were coming afterwards, after getting trained into the parts or into the OSCE stations, and when they see simulated patient there on the bed, they were even hesitant to touch them with so much, interest, and they were like, touching even like hesitantly. So this, when we felt, I talked with our curricular reforms admins and all these stakeholders, and initially everybody was very hesitant. They said that the student won't let you do work on them as a volunteer. I said, look, it's up to you. The student would do what you would tell them what is more beneficial to them. It's not that you just simply go in class and ask who is going to volunteer today for abdominal examination. Last week I had got abdominal examination, and the provider, we have one who provides us the mannequins. He said, just take the mannequin and nobody. But I said, let me try first. And I went class with mannequin, and I told them that it's up to you. I want you to get all the real life touch experience also, but we will start doing, because like, one student cannot volunteer himself for like, 100 students. They would come and palpate their liver and skin and with percussion, all these things in all 9 areas. It's like not feasible also. But we started with mannequin, and then I always asked them to volunteer themselves. 1 or 2 students appear, and we had 10 students, let them have experience as a real life patient. It was very important, as you said, that otherwise they would know, and this technology 100% cannot replace human feelings, human touches and all these things. So you are right, but I cannot say yes or no to your question. It's a debatable question. It again depends which quality of mannequins you have. But at the same time, with the very highest qualities of mannequins, they cannot replace human body texture. Human being, yes, sir. Very right, sir. Very right. Thank you very much. It was really great having all you people, and especially with the
this comment that Dr. Nadeem has made, and he allowed me to just go into detail. So I thank you all for being here and spend time with us. And now you are going to have 1 hour break, I think, before you get to the next session. And I hope to see you guys again, some other contents and some other sessions soon, inshallah. Once again, thank you very much. Stay blessed, stay safe, and keep shining, keep learning. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.